हेलो एवरीवन। और कैसे हो आप सभी। तो नमन नमन नमस्ते सबको और स्वागतम स्वागतम। आप सभी का स्वागत है फिर से होराइजन और बीटन वेस्ट के एक नए एपिसोड में, एक नई स्ट्रीम में, फाइनल एपिसोड में। एपिसोड कौन से एपिसोड में? एपिसोड 4 में। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड 4 में, फाइनल एपिसोड 4 में। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, फाइनल एपिसोड 4 में। तो आज ये गेम हम कंप्लीट कर देंगे, इसका मतलब यही है। फाइनल एपिसोड है तो तुम लोगों को पता ही है, इसका मतलब इस एपिसोड में हम गेम को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले ही बता देता हूँ, ये स्ट्रीम बहुत ही लंबी होने वाली है। जैसे होराइजन ज़ीरो डॉन की फाइनल स्ट्रीम हुई थी ना, लंबी फाइनल एपिसोड, वैसी ये भी स्ट्रीम लंबी होने वाली है। इस गेम की भी स्ट्रीम लंबी होने वाली है, फाइनल स्ट्रीम, फाइनल एपिसोड। ठीक है लोडो, समझ गए ना? तो रेडी रहना लंबे सफ़र के लिए, लंबे गेम प्ले वॉक थ्रू के लिए। 6 घंटे का होगा मैक्सिमम, ठीक है? तो 6 घंटे के लिए रेडी हो जाओ जुड़ने के लिए नॉन स्टॉप। तो चलिए लोंडो, शुरू करते हैं बिना किसी का टाइम वेस्ट करे आज का ये एपिसोड 4। हाँ 4 4 4, हाँ 4 नहीं 4 4 बोलने में ना सेक्सी लगता है। हाँ, लड़कियों वाली फीलिंग आती है 4। तो बाकी जिसने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जिसने होराइजन ज़ीरो डॉन के भी एपिसोड नहीं देखे हैं और ये स्ट्रीम देख रहा है इस गेम की, तो भाई उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए जाके सबसे पहले होराइजन ज़ीरो डॉन के एपिसोड्स देखना, स्ट्रीम देखना मेरी, जब ही इस गेम के एपिसोड देखना, स्ट्रीम देखना, ठीक है? तो दोनों गेमों की प्लेलिस्ट मैंने एक ही बना रखी है, ठीक है? तो वो प्लेलिस्ट तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी हमेशा की तरह। इस स्ट्रीम के भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है गेम की, ठीक है? दोनों गेम की एक ही स्ट्रीम है, दोनों गेम की एक ही प्लेलिस्ट है, ठीक है? तो होराइजन ज़ीरो डॉन के एपिसोड देखना पहले, फिर इस गेम के एपिसोड देखना, ठीक है? बाकी जिसने एपिसोड 1 और 2 3 नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, अगर मिस कर दिए तो फिर ये एपिसोड देखना, ठीक है, इस गेम के। तो ठीक है लोंडो, अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 4, हमारा फाइनल एपिसोड, ठीक है? बाकी ये गेम कंप्लीट करने के बाद हम फिर तुम लोगों के साथ रोब्लॉक्स खेलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सैटरडे नाइट है ब्रू, सैटरडे नाइट है वीरे, समझ गए ना? हाँ, ये गेम कभी भी कंप्लीट हो बट रोब्लॉक्स तो खेल के ही रहेंगे तुम लोगों के साथ, ठीक है? बाकी चिंता मत करना, कल संडे है और कल संडे है तो हम स्पेशल लाइव स्ट्रीम करेंगे, मतलब तुम लोगों के साथ रोब्लॉक्स खेलेंगे कल रात को। कल रात को हम सीरीज वाली स्ट्रीम नहीं करने वाले हैं, तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो कल रात को हम मस्ती वाली स्ट्रीम करेंगे, मतलब तुम लोगों के साथ रोब्लॉक्स भी खेलेंगे और अपनी चाइल्डहुड की गेम्स खेलेंगे, मतलब मेरी, ठीक है? तो ठीक है लोडो, शुरू करते हैं आज का एपिसोड 4। 36 बार बोल चुका हूँ, स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट यार बताना जरूरी है ना कि लोग पहले के एपिसोड देख लें होराइजन ज़ीरो डॉन के, फिर इसके एपिसोड देखें और फिर ये वाला एपिसोड देखें, ठीक है? मज़ा आएगा रात को। हाँ तो लोडो, आज की रात तूफान होने वाली है, ठीक है? और चैनल अब आ चुका है वापस से ट्रैक पे, ठीक है? बाकी हम गेम्स तो ख़त्म कर रहे हैं इसलिए भी ट्रैक पे आ चुका है, हमारा रूटीन सही चल रहा है। बाकी ग्रोथ वाइज भी थोड़ा किसी की नज़र ना लगे, ठीक है लोडो? अब स्टार्ट करते हैं आज का ये फाइनल एपिसोड 4 हमारा, ठीक है? फाइनल एपिसोड 4 जहाँ से छोड़ी थी गेम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा पीछे से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि गेम मेरे चाचा की नहीं है कि जहाँ से मैं छोड़ूंगा वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो कटसीन से प्ले करेंगे जब एलोए चेक करने पहुँचती है, एग्जामिन करती है कंसोल को, स्पीड्स सीड्स ऑफ द पास्ट में। हमारा मेन क्वेस्ट चल रहा था सीड्स ऑफ द पास्ट, और एलोए एग्जामिन करने पहुँचती है कंसोल को, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे लोडो जहाँ से गेम छोड़ी थी, ठीक है? तो चलिए लोडो शुरू करते हैं। Log. Just got off the line with US Robot Command. Time's running out. Didn't have the heart to tell Harris that our cure might be worse than the disease. Even if adamantine wreath works, we still have to prove we can curtail the trailing plants efficiently. But Cobble's team is working on it over at Test Station Ivy. He'll come through. He has to. Adamantine wreath. Another secret project. Well, they made the metal flowers here and the vines, so maybe I can find a way to destroy them.
If I can find Test Station Ivy. How do I get out of here? There we go. Great. These guys again. Whoever they are, they want me dead. I better be... Okay. I could take those soldiers out quietly. There's a barbarian in the compound. She got past the lookouts. Find her, kill her, and bring her head to the lieutenant. Understood. I guess diplomacy's off the table. I'm sick of the whole business. Trees, the weather. None of it feels like home. When we return to the Great Delta, they'll greet us as heroes. We've got a body. Find who did this. Find who did it. Now! Hey! Face justice! I think I see something. To arms! Finish the hostile! I really wish these people would talk to me instead of trying to kill me. Oh, now I need to find a way out of this courtyard. That door looks promising. I submit. Do as you will. I didn't want to fight your friends out there. They attacked me. If by death alone I can atone our trespass. I'm not gonna kill you, okay? I just want to figure out what's going on. Where did you get that focus? I am of the chosen people. The Quen. The ancestors left the power of the focus to us alone, the eye that reveals the legacy. The legacy, huh? The legacy? The truth. It is in the darkness and the lost places, among the ancient ashes and the bones of the before that it lies waiting. As a diviner, it is my task to seek it out for the good of my people. You're looking for data. Maybe we can help each other. What's your name? Alpha. Second diviner of the Eastern Expedition. I'm Aloy.
Why don't we start again? I'm looking for a place in this facility called Test Station Ivy. Have you found any data that mentions it? No. But I did find something that looks like a map. But it was unreadable. Lost. Maybe I can make some sense of it. There. There's a lot of files here. I've been through all of them. Look in the GH facility section. Like I said, a lost file. You can't see the map? It's okay. Looks like your focus is an early model. The operating system won't be able to read any files created after the mid-2050s. But I could share them with you. Share them? You can see what is lost and forbidden. Not lost, not forbidden, just a newer format. There. That's where I need to go. But you can't get there. We've been here for a week trying to get deeper into the complex. The way has been blocked by rubble. What about this tunnel? It looks like it unlocks from here. No. I thought these might be some kind of access controls, but I couldn't read enough data to make them work. Let's try with my focus, okay? I believe these consoles were meant to be operated in unison, but I'm not sure. Okay, here we go. Following your lead. The ancestors have shown us the way. Come on, let's go. You want me to come with you? It took both of us to open up that tunnel, didn't it? Oh, this place is a maze. According to the map, there should be another exit further in. Just stay close. Lead the way. हाय भाई सबको हाय हेलो You actually brought us in. I was dreading having to stay here any longer for those soldiers. The way they slaughtered the barbarians that approached the site. It's like they enjoyed it. Most of my people aren't like that, I promise. Well, that was loud. There has to be a way out of here. Through here. According to the map, the exit should be this way. I'll be glad to get back above ground. Yeah, it feels like a tomb down here. A hatch at the top of the ladder. That can't be good. They fly to and from the complex several times a day. Only the ancestors know why. Well, the ancestors are dead, Elva. Of course. How else could they be ancestors? Looks like we have more pressing concerns. Follow my lead.
machines. We can fight them, or try to sneak past. Your call. क्या और कुणाल कैसे हो, पहचाना? अच्छा 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 अंशिका, अरे भाई आज कैसे दर्शन दे दिए पहली बार। क्या ये क्या हो रहा है बीएम जी भाई? जो लोग भी आ रहे हैं ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो लोग आपको जानते हैं। हाँ 2-3 ही तो आई हैं। अंशिका ही है और ये गरिमा आई है और अर्पिता आई है बस। और कौन जानता है मेरे को? और कोई तो नहीं जानता। I've had a lot of practice. Now, we can find a way back into the facility. A vent. I think I can pull it open. Got it. I'm right behind you. Maybe we can get through that hatch on the ground. It looks like the one we used at the first station. There's consoles up here too! I know how to get to them. You stay put. I'll see what I can find. क्या कुणाल भी कार्तिक भी दोनों नेम? अरे निक नेम है यार कार्तिक मेरा। मैं कार्तिक ऐसे ही लगाता हूँ पीछे गैप फिल करने के लिए भाई। Maybe something down here could help me reach the consoles. जब गूगल का अकाउंट बना रहा था ना मैं पब्लिक वाला, तो उसमें मैंने कार्तिक डाल दिया था निकनेम, बस ऐसे कूल बनने के लिए भाई। कूल बन गया भाई मैं। There we go. Huh. There's some space back there. This should help. क्या कुणाल ऐसे चुप होकर खेलो जब भी लोग टिकेंगे? वही कर रहा हूँ मैं, चुप ही हूँ इसलिए। क्या आलिया ने भेजा तुम्हारा चैनल मेरे को आज, बट मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, बट कभी सजेस्ट ही नहीं हुआ कभी। आधे भाई लोगों को मेरा रियल नाम ही नहीं पता, बता जरा। Yeah. If you can hop on top of it, I can get you to those consoles. Exactly!
भाई कोई काम्या नाम की नई लड़की आई है भाई, सब्सक्राइबर हमारी। सही है, लड़कियां लोग भी देख रही है। Let me just... I jumped on top. Hold on. That's good. Jumping over. Made it. I'm at the console. Wait. There's data here. A lot. But it's blocked. Something's restricting access. If I can't get past it, my mission here is doomed. Alva, I'll help. If I can, okay? But first we have to get out of here. Right. We need to open the hatch. Okay, let's see. Okay. I'm unlocking a storage unit. There should be a power cell inside. Then you need to find a way into the generator room. Okay, I'm on it. I gotta move this. I found the energy cell. Now find a way into the generator room. चैनल का डिस्क्रिप्शन देख लो। सही कह रहे हैं अंश भाई। स्टीम देखते हो यार, नाम नहीं पता मेरा यार, तुम क्या देखते हो? Aloy, would you mind warning me next time you decide to blow up a wall? I'll, try. Okay. That brought power back to the doors. You can reach me now. On my way. क्या मैं ऐसे ही बोल रहा था, इतना ध्यान मत दो भाई, हम तुम्हारी बातों पे ध्यान भी नहीं देते। Okay. We need to operate both consoles simultaneously to open the hatch. I'll get to the other console. You stay here. Ready when you are. Okay, you ready? On 2. 1, 2. Yeah, 1 2 गेम पे ध्यान दे लो दोनों, गेम पे ध्यान दे लो। तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम लोग को समझाऊंगा मैं, इसलिए खुद देखो खुद समझ लो। Okay, that's where we need to go. Magnetic field engaged. Initiating biomass conversion process. What? No, 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 no. How do I shut this thing off? Failsafe exceeded. Test cannot be aborted. What is this? It's how the world ended. Test complete. Adamantine read structural integrity uncompromised. What did we just see? Alva. Let's meet below. I'm gonna share a file with you, okay? Test log, I think it's Tuesday the 2nd? Who cares? I'll say this for the end of the world. It's jam-packed with irony. We developed biomass conversion here. Infinite food for infinite machines. And now we're racing against time to find something to give them indigestion. Well, it works. War machines won't be able to eat the wreaths. But can we deploy
redeploy them in time. God, I hope so. I don't understand. Your ancestors? They were wiped out. Your legacy didn't tell you that? The time of ashes. But most of the data about that is lost or forbidden. Well, they created machines that consumed all life. You just saw how. It's a miracle anything survived. I don't want to know this. This is not why I'm here. I need the wisdom of my ancestors to help save my people, not forbidden knowledge of their sins. I need to find something that helps, something to bring back. The overseers will punish me. Or even worse, people will die. Do you understand? My family, my sister. I left her when she was 14. Already you could see her bones. They will starve. Alva. Alva. I get it. I do. It's hard to explain, but you and I are working toward the same goal. And if I succeed, your people won't need any data. Things will just... they will get better. But even if I believe you, my people won't. I need to bring something back. Okay. Then we'll go to Test Station Ivy. And if I can find a way to kill those vines, then I will have access to the data core. What I need is in there. I'm pretty sure that if I take it, it will unblock access to all the data that this place has. And that will give you something to bring home. I'm not sure I understand. But every secret makes its own maze. A diviner must persevere. Go on. I'll follow. We need to keep moving. Test Station Ivy can't be far off. Another maze. But the road to truth is never a straight line. So the metal flowers, what the data refer to as adamantine wreaths, they were supposed to stop the destruction that caused the time. So I never asked. Are you from around here? No, I'm not. I spent most of my life in post-apocalyptic. Oh, we've both traveled a long way then. Cold and damp down here. This is it. Okay. Let's find a way to get into the proving ground. क्या पानी है भाई. That complex should be Test Station Ivy. Let's hope it holds the answers. It's so still. Yeah. Keep your guard up. Whoa! Into battle! It's one of those machines. अरे भाई. It can turn invisible. लाइट वाला चमका देना भाई. To the test station. लाइट वाला चमका देना भाई. चल रहा है. अबे ये एल
अबे भाई आज तो बहुत सारी ऐसी दोस्त आ गई जिनसे मैंने सालों से बात नहीं की, मतलब मैं कर ही नहीं पाया जिनसे सालों से बात। आज वो दोस्त लोग भी आ गए भाई, पहली बार चैनल पर। सही है यार। तो बाकी के लोग तो भाई ऐसे जिनको मैं जानता नहीं हूँ, कुछ नए बंदे आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो नए हैं भाई, ज़्यादातर लोग तो नए आ रहे हैं। अरे तेरी यार, ये ले हिटमैन है, हेल्थ भी रिकवर नहीं कर सकता मैं। भाई थोड़ी सी हेल्थ रहेगी लोंडो, ये चमका रखी ना ये, बट ये नौटंकी तो नहीं कर रहा है ना। तेरी अबे भाई मारने दे चाचे। Securing one of the metal. Well, you helped. We should be able to get into test station Ivy now. अब टेस्ट स्टेशन चलते हैं। There has to be some data here on the adamantine wraith we can use. I trust your focus will see what mine cannot. Oh, that's interesting. Find something? The 4th test station. This console's Willow. still operational. It looks like it's underwater. Another log. We're done in every way. The reeds work. The cargo came through on a way to destroy them. अरे जान लोग भाई भी आ गए, कह रहे नो LGBT। Deployment shell triggers an enzyme that causes the reeds to eat themselves from within. I can't leave here until I find what I need. It's too late. The latest projections from U.S. Robot Command have swarm reproduction, outpacing our ability to drop the shells by 375%. Not even close. I guess we deserve this. I deserve it for what I made here. This will be my last log before evacuation. So all their efforts were in vain. They ran out of time. At least we have the software module they created. It should get rid of the vines produced by the metal flowers. I need a workbench to load the module onto my spear. There's one back at our camp. The map showed a path leading back there past the next room. अब भाई तुम्हारा पुराना नाम क्या है? मेरा बेंजी भाई का फुल नाम क्या है?
भाई कुणाल है भाई मेरा नाम, That पूरा must नाम be नहीं the बता fourth सकता मैं। testing station we saw on the map. Looks like it's been flooded for a while. In here. We'll have to climb up. Right behind you. बोलो अंश भाई। We can use the line to get down. Right. Easy. बाकी भाई जो तुम अपना नाम बता रहे हो ना भाई, मैंने तो पहली बार नाम सुना है, सुचित But सचित we जो better भी है। make haste. तुम्हें शायद लग रहा होगा कि तुम मेरे को जानते हो, है ना? नहीं है भाई, मैंने पहली बार सुना है भाई तुम्हारा नाम। बाकी भाई मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ शुरुआत से भाई। Now what? Now, we get to that data core. As I was saying, I still can't believe you took on all these soldiers by yourself. But we better make haste. After we encountered barbarians, our lieutenant called for reinforcements. They could be here any time. Right. Let's hope this new module works. So is Bluemate. Let's see if the software works. Vines. They're falling apart. Door's clear now. The data core looks intact. Time to bring Demeter home. Demeter? It's time to go home. To Gaia. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Demeter's subordinate function to original code. बस मिल गया लौंडो What ये did भी। you do? I've never seen my focus glitch like that. I found a special type of data. It's something you can't read. But they kept a tight grip on the data core. But now you should have access to the central server. All of it. Should give you something to bring home. You were right. Hundreds of archives. Almost all of it relating to agriculture. It would take us years to get through all of this. But we don't have that kind of time. What you said before about... अबे छुप जा, वो छुप नहीं रही देख। Alba! Hold your fire! अच्छा इसके By बंदे the हैं क्या? word of the ancestors, you must stop. Come. Look at who you fired on. That barbarian killed our soldiers! Only those who fired blindly. She is no barbarian. She gave me the data we need. Come, look at her. Can't you see? Elizabeth Sobek stands before you. An ancestor reborn. अरे भाई साहब, पर झुका लिया वो। लो अभी चोरी हो गई। We should bring the ancestor back. It is we who follow their word, Commander, not the other way around. My apologies, Dr. Sobek. Our people's faith is strong, but there are those who are not as familiar with the legacy as they should be. You heard the diviner. The data has been found. You two, with me. The rest of you, meet us back at the beach for return to landfall. एलोय हैरान हो रही है, उसको इतनी इज्जत मिल रही है। डॉक्टर Can't सोबेक। talk long. They will have many questions. So do I. Your people know a lot about the past. And about Sobek, I guess, but they're... Please, I must know. What you said before about working towards the same goal, how long will it take? I don't know. A few months? Then you are my family's best hope. Let nothing get in your way. You have opened my eyes to many things, and for that, I thank you. But now you must go. Will I see you again? Soon we return to Legacy's landfall.
It might be dangerous for you to go there. Tell me how to reach it, just in case. It is far west, by the ruins near the broken bridge. San Francisco. Yes, you are well versed in the legacy. We made landfall on the northeast edge of the sunken city. The currents around the archipelago are vicious, and the only approach is from the south, and it is guarded. Only attempt to go there if you must. Diviner! What's the delay? Please, go. If you attempt to stay here any longer, they may want to take you with us, and that won't go well for anyone. I'm gonna do as Alva says. I need to get Demeter back to Gaia anyway. But I might want to explore the area before I make the trek back to base. And now I can use the vine cutter on those other metal flowers I found earlier. तो भैया आ गए इधर हम इन लोगों से पहले बातचीत करनी होगी करते हैं I'm telling you, it's a drink, but it's soft. Aloy, you've returned. And you come bearing gifts. Does this mean we'll soon be able to uproot the zeniths from our lands? That's what I'm hoping. Good. Now that you have those control cores, are you ready to reboot the land gods in Plainsong? Not yet. Gaia told me the reboot code has to be altered using data from the cores. She updated my focus with software to accomplish this task, but apparently it's very complicated. It'll take time. Well, let me know if you need any help. I will. I should get going. If you need me, you know where to find me. ठीक है जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे तेरे को एरेंट बैठा हुआ था कोई ना बाद में देखेंगे उसे पहले हम इधर जाएं भाई गाया के पास It is good to see you again, Aloy. I see you have recovered Demeter. With the acquisition of Ether, Poseidon, and Demeter, my heuristic processing density has expanded greatly. I should now be able to absorb Hephaestus, and fortunately, we have made progress on a plan to capture it. With Varl's encouragement, Beta analyzed all available information on Hephaestus. Its expansion has been rampant. It is too large to be beamcast, and the kernel you've been using could never hold it. Therefore, it must be contained in a location with a direct physical connection to me. A place with 2 data cores. 2 cores. Where would we find a place like that? Gemini. Gemini? An abandoned cauldron in the desert west of here. Seismic activity disrupted the original construction. 2 data cores were built as a result. I've been there. The Tanakh marked the entrance as some kind of ritual ground. We'll have to bring you there by hand. I have devised a blueprint for a suitable, albeit unwieldy, transport rig. It will require 2 people to carry it to Gemini. Gemini, okay. I can help. Help करेगा. Once I am installed on the first core, I will call down Hephaestus on the other, trapping it. I will then initiate the merge. However, in order to construct the rig, I will need considerable help. Can you build it? I suppose I could, but it's not gonna work. The Zeniths will find you. Minerva won't be able to conceal your location. That is correct. Absorbing Hephaestus will create a significant power surge, easily detected by anyone capable of noticing. Ooh.
But what if there were multiple power surges? To fake out the zeniths? If Erend, Zoe, and Katalo spread out to the other cauldrons and create their own surges, would those conceal the one at Gemini? Analyzing. Such a tactic might be effective. With Beta's help, we should be able to build a set of handheld pulse generators. I told you it's not gonna work! I did a test. Hephaestus has written Alpha clearance out of its access module. You'll never be able to capture it. Then we need a higher level of clearance. There is no higher... Ted Pharaoh's mega clearance. The one he used to purge the Apollo database and kill the Alphas. But to get it, you would have to find Thebes. The private bunker he retreated to when the world ended, and nobody knows where that is, not even the Zeniths. Their only intel was that it was somewhere in San Francisco. That might be all I need. Alva, the Quen diviner I met, said her people had set up a base at landfall. They were searching for data in San Francisco from there. She might be able to help. So I guess I'm headed all the way west. While I'm gone, will you be able to build the rig and the pulse generators? I'll try. I'll make sure she has what she needs. Alva said the Quen have a ferry on the coast that they used to get to the ruins of San Francisco. That's where I need to go. क्या एलोय दिमागदार है हमारी, उल्टा वो समझा रही है बीटा को, वही तो. Aloy, I have managed to unlock an additional room near the servers. Understood. The old ones fed off livestock a little too much for my liking. So that's where the rebels chose to take a stand. Got a minute? As many as you need. I have to travel beyond the western coast. To the ruins, shrouded in fog. Yes, and I'm looking for a tribe, the Quen. I encountered them once before. They said they came from across the Great Ocean. I was hoping that Tenakth knew more about them. There were rumors of trespassers in the area, but we thought they were just bandits. Hikaru sent out a patrol or two, but I don't recall them reporting back. We've had more pressing concerns, as you know. I'm sorry. That's all I can tell you. It's okay. I guess I'll find out soon enough. There is something I've been meaning to discuss with you. It's personal. If you have a moment to spare. You said there was something you wanted to talk about? I've been speaking with Gaia. She mentioned that the Zeniths bind metal with flesh to make themselves stronger. I was wondering if you'd help me do the same. You want to make yourself a new arm? Yes. Gaia insists she can help me build such a thing if I can get the necessary data and materials. She believes these things lie in the place where Beta hid from the Zeniths. Their ancient research lab. I'm not as familiar with old-world machinery as you are. I could use your assistance. It might be dangerous. The Zeniths probably still keep an eye on that place. We were lucky to get out of there alive the first time. I see. It sounds like this is worth the risk. By the 10, we shall see it through. What have you been up to? Varl has asked to learn the differences between my people's clans, so I've been teaching him Tenakth history. It is heavy with blood and death, but also with honorable deeds and vanquished tyrants. Maybe you'd like to hear about it as well, when our mission is done. I'd be honored. What do Tenakth do to relax? You know, to take a break from training? We play strike. Your Oseram friend, Erend, is surprisingly good at it, although he has yet to beat me. It helps one think strategically, hones the mind for tactics. Somehow that still sounds like training. Anything interesting happen while I was away? I found an acceptable place to practice with my blade. Oh, and where's that? Outside, above the base.
There's a nest of sunwings that are always up for a fight. Ever thought of sparring with something that's not trying to kill you? That would defeat the purpose of the training. Found anything interesting during your training? Gaia told me where to find data on how wars were waged in the old world. I knew the Ten fought against machines, much as we do now, but it seems they were among the last of their kind. Later, machines battled other machines on behalf of greedy leaders, as they vied for lands and spoils. At least the Tenakth have the courage to put their lives on the line when conflicts arise. There is nobility in that. But maybe we just need fewer conflicts in the first place. Yes, of course. Hekarro would have it so as well. Anything else you've been looking at with that focus? Gaia showed me the knowledge you recovered out in the desert. I am no chaplain, but I'd be curious to test if something I read is true. What is it? The Old Ones believed one could hear the great waters, even in the middle of the desert, if you carried the carcass of a water animal with you. They called them seashells. That sounds kind of gross. I should get going. I've got a long road ahead. Should you need reinforcements, I know who to call. I'll call you when I'm near the Zenith lab. We'll get what you need for that new arm of yours. thank you, Aloy. रमा भाई क्या कह रहे हैं 100+ लाइक्स और 815+ वॉचिंग. I hear you're going further west past the Tenakth clanlands. Do you know anything about the area? Only hearsay. The Utaru tell stories of an island that lies beyond the western coast. They call it the Isle of Spires. It is said the Old Ones built towers there that touched the sky, so they could live far away from the earth that bore them. As if they didn't want to be reminded that they'd one day return to it. Sounds like something Ted Faro would do. Any progress with your plan for the land gods? Is the reboot code ready? It is. But there is difficult work ahead. Gaia warned me that because the land gods are linked together in a network, the code must be delivered to all of them. Most are in Plainsong, but in recent years, 3 of them wandered off. So, T, and Do. We have to find them? No, we know where they are, but they're hard to reach. So, wandered into a lake and sank. Do ventured into a dangerous canyon, and T broke down amidst a herd of machines. Okay. Tell you what. You go to Plainsong, handle all the land gods there. I'll take care of So, T, and Do. I'll need their locations, plus the reboot code. I'm sending the data to you now. My people made shrines near where each land god faltered. When you see them, you'll know you're close. And once again, thanks for your help. We're not gonna let your people starve, Zo. I promise. Well, I should get going. Hopefully I can bring back what we need to capture Festus. After that, I'm gonna need everyone's help. We'll be ready. ये लोग भी थैंक्स कहते रहते हैं हमें. तो इन्हें प्रॉमिस करा कि मैं तेरे लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा. से बात करते हैं. What's this I hear about you going west? Turns out we need one last thing before we can grab Hephaestus. Because it would have been too easy otherwise. Anything happen I should know about? Zoe asked us to help her bring more plants in here. Not for eating, apparently. Yeah, if you ask me, the place is fine as it is. You know, metal might be plain, but it's sturdy. Nothing wrong with that. Who needs a bunch of vegetation? How are things with Katalo? You still scared of him? Oh, she thinks she's funny. Actually, I played strike with him. I had to fill in most of the conversation myself, but I'm still alive. Glad to hear it. I need to get going. I think I know the answer, but are you sure you don't need any help? Gaia mentioned this other tribe you found, the Quen. They sound like a nasty bunch. I can handle them.
In the meantime, Varl will help you get ready for what comes next. Take care of yourself, Aloy. Aloy, it's a long way to the coast. If you need to resupply en route, I suggest stopping in Fall's Edge. It's a lowland clan village southwest of the Grove, in the heart of the jungle. Got it. Thanks for the advice. रोंडो अब हमें आखिरी पकड़ने जाना है एफेटिस जो भी नाम है उसका, ठीक है, जिसको पकड़ने के लिए हमने बाकी के पकड़े थे संफंक्शन सबसे पहले, जिसको चालू करने के लिए अब हमें उसको चालू करना, ठीक है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे ना इतने टाइम से 2-3 एपिसोड्स में। अब हम फाइनली उस फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी जो कि बाकी फंक्शंस देते, तो बाकी के फंक्शंस जो बच रहे थे 2-3 वो हमने लगा दिए गाया में। गायों को एनर्जी मिल गई है उसको एक्टिवेट करने के लिए, जिसको अभी हम पकड़ने जा रहे हैं, तो उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर गाया परफेक्ट हो जाएगी एकदम, ठीक है लोंडो। यही चल रहा है गेम में, कुछ और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं चल रही है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं चल रही है गेम में, बस यही चल रहा है। तुम लोगों को बताया था मैंने कल, और कुछ कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं हो रही कि तुम लोग को समझना है। तुम लोग को मेन टास्क पता ही है हमारा क्या कर रहे हैं, हम फंक्शंस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने सारे कलेक्ट कर लिया, बस एक लास्ट रह गया है जो कि मेन वाला है। गाया की बातें ढंग से सुन लियो करो, बस गाया की बातें सुन लोगे ना, और इनकी तो ये लोग गाया के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं, तो फिर तुम लोग को समझ में आएगा सब। अभी गाया तो बता भी रही थी कैसे कैसे क्या क्या करना है। बेटा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी तो पट्टी रहती है कि जैनित के बंदे आ जाएंगे, जीनत आ जाएंगे, जीनत आ जाएंगे, ठीक है, उसकी तो पट्टी रहती है बेटा की, लोंडिया की, ठीक है। फिर एलोय ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, किसी काम की भी है। लगी भी उसको? नहीं नहीं आ रहा भाई, आ रहा है, लगी तो है शायद। अब लगी बेटे भाई, पावला हो गया मुझे, और मारता हूँ। चल भाई, कितना बड़ा हेल्थ बार ले रहा है ये, कितना बड़ा हेल्थ बार ले रहा है। उधर भाग रहा। यस, ये उठा के मारूँ इसके नाम। यस ये भाई, अलग अलग वीपन्स देखने को मिलते हैं लौंडों में। मैं पी के जो भी कहूँगा, क्या तू सुबह तक बुला देगी क्या? साहिबा रातें काटी जाए ना। वे यार, अबे कैसा मुंह बना रही थी एलोय, तुम लोगों ने देखा जब इसको लगती है तो कैसा मुंह बनाती है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाट मसाला भर के चटवा दिए ऐसे, बहुत सारा चाट मसाला इसके मुंह में डाल दिया। अरे भाई चटके ले रही है, ऐसा मुंह बनाती है।
क्या आलिया, तू तो कह रही थी 1000 वॉचिंग आएगी। अरे पलक दी 815 वॉचिंग आ रही है, वही बहुत बड़ी बात है। सही बात है यार, सही कह रहे वर्मा भाई। अरे पलक को तो कम ही निकालनी है ना। I see you, champion. You can make yourself stand out like that. Zenith Research Lab's right up that cliff. Catalo said that's where we'll find the parts to build him an alarm. Hey, Catalo? I'm at the Zenith Lab. Ready to come over? I'm on my way. Aloy, I appreciate you meeting me here. I'm happy to help. Did Gaia mention where exactly in the Zenith Lab we'd find what you need? She mentioned the chamber where you found Beta, and the database that lies within. She said it'll help us find the knowledge and components I require to build a new arm. At least we know where to look. We will have to be quick about it, in case the Zeniths are watching. Understood. The lab's up this way. You okay? I got this. Machines. They're scrapping the Spectres for parts. Should we dispose of them? Or we can sneak past them. Your choice. Engines must be spitting out hunter-killers, too. Battle it is. Time to follow up! Back to battle, Aloy! Entrance to the lab is by that tunnel. Come on. The enemy did this? Hard to believe, but yeah. Enemies up ahead.
We better get a move on. The room we found Beta in is up ahead. Lead the way. Shit. Machines are down. We should continue. Is that it down there? Yep, we better make our way down there. Varl mentioned you found Beta in one of those ponds. I would hate to be locked up inside such a thing. There's barely room to breathe. You see something? क्या ओके बाय बीएमजी भाई, कल की स्ट्रीम में आऊँगा। ओके आ जाना नोटिफाई पे क्लिक करके स्ट्रीम के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अलोय दिमागदार है हमारी, उल्टा वो समझा रही है बीटा को। वही तो 100+ लाइक्स, 815 वॉचिंग। आलिया तू तो कह रही थी 1000 वॉचिंग आई। अरे पलक दिया 815 आ रही है तो वही बड़ी बात है। मेरे को क्या मेरा काम था बैन हटाना और बूस्ट करना, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ। और यूट्यूब मेरे पड़ोस का अंकल नहीं है जो मेरी बात माने। ये मस्त था, मेरे पड़ोस का अंकल नहीं है। सही बात है, कॉन्स्टेंटली 800 वॉचिंग आ रही है, वही बड़ी बात है। सही बात है, लगातार 815 वॉचिंग आ रही है, 800 वॉचिंग आ रही है, वही बड़ी बात है भाई। लगातार वॉचिंग आना, कॉन्स्टेंटली कम नहीं होना, वही बड़ी बात है भाई। अरे तो 1-2 वॉचिंग में ही Let's hope it holds the answers we seek. पहले तो 1-2 वॉचिंग में हिलता रहता the था। database to your focus, so you can search through it later. What about the components? They should be somewhere on the specters. Shit. पहले तो 1-2 वॉचिंग ही ज़्यादा होती रहती थी, दिमाग खराब। Covered in an acid. वह भाई The Zeniths might send reinforcements. We need to finish up and get out of here. The components should be somewhere on the second floor. I'm right behind you. कंपोनेंट्स सेकंड फ्लोर पे होंगे, होनी चाहिए। बाकी क्या बहसबाजी चल रही है नोट होती? क्या तू खुद कुछ कर नहीं सकती है इसलिए मेरे को मत बोल कुछ। मैं कर रही हूँ इसलिए मेरे को करने दे कोशिश चुपचाप। सही बोल रही है, ये बात भी सही है। बस रात को वॉचिंग कम आएगी, जैसे आफ्टर 2 AM 3 AM, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में रात होने वाली होती है। ये बात तो पता ही यार मेरे को, इंटरनेशनल कंपनीज में काम करता था यार, पता है ये बात नहीं पता। बाकी डेली 20 से 30 वॉचिंग आएगी तो फिर क्या दिक्कत है, अब एक्टिव हो गया चैनल। और 20 से 30 वॉचिंग आएगी डेली, और क्या चाहिए भाई लोगों में। 1-2 वॉचिंग से तो ठीक है। बाकी इंडियन लोगों का क्या है, इंडियन बच्चे तो आएंगे जाएंगे। I'll keep a lookout. Don't want any more surprises. Good idea. बाकी इंडिया के ऑडियंस से उम्मीद नहीं रखना, उम्मीद रखना बेकार है इंडिया के ऑडियंस से। तो वो तो आएंगे और जाएंगे।
क्या आज से रोज देखेंगे, आज से रोज देखेंगे और पूरी स्ट्रीम देखी नहीं जाती। पहले नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था। Might be a way out of this room. तो भी आ गए इस कमरे में, बोल रही है ये वाला कमरा हो सकता है। ये और आगे जाना है क्या? हाँ दिखा रहा है यहाँ। ये खोलते हैं ये। हेलो कह रही इस साइड पे है वो दरवाजा, दरवाजा कह रहा हूँ कमरा। देखते हैं भाई, जाना पड़ रहा है अभी तो। आ गए ऊपर। बचपन से ऐसे ही चलती है एलोय। एंगल, साइड कैमरा एंगल। Components have to be here somewhere. कहीं तो होंगे यहीं कहीं कंपोनेंट्स। Please tell me the components are in there. Gotcha. I should go back and give these to Kotalo. तो ये क्या हो गया? अच्छी हुई भाई गेम ना, कुछ होता ही रहता है। चल गई। You found the components? See for yourself. You have my thanks, Aloy. Something wrong? I was just thinking about what it will be like after I build the arm. Will I feel different? Whole again? Idle thoughts. They can wait until we're back at base. You go on ahead. I might want to take one more look around, in case there's anything useful. Very well. I look forward to putting what we found to good use. Walk with the 10. May your name be honored. This must be Fall's Edge. Tala said I could resupply here, then head for the Quinn Ferry. I wonder if finished the war here. She's clear to enter. Your courage serves you well. Treat you well out there? Doubted the chief's word. That look. It's time to change it. Right. Okay. क्या परंजल आया नहीं बेंजी भाई फिर से आज? उसको छोड़ दो बोला था वर्मा भाई। सही कह रहे हैं भाई, लकड़ी भाड़ में जाने दो उसको। Quite a sight, isn't it? Never thought I'd find myself this deep in Tanakh territory. Have you run into any trouble? I've been keeping my head down. Had to duck into the swamps a couple of times to avoid Tanakh patrols. Well, I'm here now, so spill it. Who is Amatis, really? Like I said before, he helped me put a stop to a hunter-killer machine out in the wilds.
At first, he thought I was just another hunter from the lodge who only cared about the biggest machine trophy. And I thought he was just a grouchy hermit living in the woods. But then he trusted me with the truth, told me how the Red Raids took everything from him. Seeing that side of him, I don't know, changed things. You love him, don't you? I think I might, yeah. Then why did you part ways? When he told me how he failed to save the woman from his past, I told him how I made peace with my father and brother's deaths. He realized he needed to do the same on his own. Wait. When we searched that Red Raid's battlefield together, you said he'd lost someone close to him there. I thought you meant a fellow soldier. She was. Women aren't allowed to serve in the Karja army, but Nessa disguised herself so she could. Amadis kept her secret. When he left to come out west, he promised he'd send word that he was all right, but his letter never came. So you set out to find him. And when we do, I'll have words for him for leading us on this wild goose chase. Well, at least I kind of understand now. Amadis thought Nessa died on the battlefield, but when he learned that the Tanakhs took prisoners back west, he kept going. So I guess now we find this prison, the Rot. I did some scouting while I was waiting. I think I might have found the way. Lead on then. Do you think Nessa might still be alive? I doubt it. Any Karja prisoners from the Red Raids would have been killed or returned home by now. Then what's Amadis after? I think he just needs to know. क्या जो आ रहा है आलिया कह रही जो आ रहा है उससे मतलब रखो, जो नहीं आ रहा है भाड़ में जाने दो उसको। सही बात है। अब से 20 से 30 वॉचिंग आएगी, इसलिए आलतू फालतू की परवाह मत करो। 10 आएंगे 10 जाएंगे, सिंपल। पर जो हमें करना है हम वो करेंगे। सही बात है। कुणाल ऐसे लोगों का स्ट्रीम पर नाम मत लिया करो, गेम प्ले मत खराब किया करो। Come on. Got you. Talana? We've got your back. Bring it. We'll see. क्या हमेशा वीडियो में 1K प्लस व्यूज़ और 1K लाइक्स होते थे, बट आज स्ट्रीम पर ही क्रॉस होंगे। देखते हैं। बाकी मेरे को लाइक्स वाइक्स से इतना लेना देना नहीं। कोचिंग आ रही है वही बड़ी बात है, वही काफ़ी है। इससे बात करते हैं। Talana, You were supposed to let me know you were okay. I was going to send the message right after I crossed into the desert with an Oseram caravan.
But when it became clear that the tunnel had collapsed behind us, I figured the only thing I could do was press on. Seeing as you found a way out here, however, clearly I was wrong. I'm sorry. The last thing I wanted was to worry you. So, you must be Amatis. And you must be Aloy. Talana's told me a lot about you. And I guess you must know about me. A little. We know you're headed for the rot. But what are you hoping to find there? A clue. Or a shred of one. Anything about Nessa's fate. Maybe she died on the battlefield. Or maybe she wasted away in that prison. Either way, I have to know. Talana told me about you and Nessa during the Red Raids. That you kept her secret. We were both assigned to the Southern Spear Division. Our orders were to push into Tanuk territory through the tunnel. She was proud to serve the Sundom at first. But as the atrocities mounted, we both saw the raids for what they were. And the two of you grew close? We did what we could to protect innocent lives. It felt like we were the only ones who objected to the slaughter. And yes, we were close. Until the Battle of the Burning Blooms. So, you and Talana, sounds like the two of you had an adventure out in the wilds. Clawstriders, a hunter-killer, mercenaries, a shell snapper. Nothing could get in our way. A scruffy hermit in the woods certainly tried. That was foolish of him, in hindsight. Well, we're here now, so let's head to the rot. I can't ask you to come with me. I feel bad enough you've come this far. I didn't come all this way just to leave you now. We'll see this through together. I know better than to try to talk you out of it. Come then. The rot's not far. The rot's along the shore, but we'll have to stick to the woods to avoid being seen. How did you find it? I overheard a Tanuk patrol from the nearby village talking about it. Figured it out from there. What were you gonna do if we hadn't found you? Take it on alone? I only need to question one guard. Figured I'd grab someone when they're by themselves. Well, none of us. We're getting close. There it is. The rot. Those are Regala's rebels. They're waging civil war against the rest of the Tenakth. They must have taken over the prison. Then they would have killed any of the guards. They were my last hope of finding out if Nessa was there. Maybe not. There might still be some clue inside. Even after all this time? Aloy can see much more than you or I. Then let's do it. Any scrap of hope is better than nothing. We'll have to find another way in. The front gate looks impenetrable. And there's no way we're scaling those walls. You two stay here. I'll see if I can find another way in and get that gate open. I should check around the sides. Might be a way in from the water. क्या करते हैं साइड चेक एंट्रेंस ढूंढना नोड जाने का अंदर बाकी के लाइव चैट पढ़ूंगा क्या कुणाल ऐसे लोगों का नाम मत लिया करो स्ट्रीम पर गेम प्ले ख़राब मत किया करो गेम प्ले ऐसे लोगों की बातें करने से कुछ फ़ायदा नहीं गेम प्ले पे ऐसे लोगों की बातें करने से कुछ फ़ायदा नहीं वही तो इसलिए तो कई बार मैं ध्यान नहीं देता नाम नहीं देता वर्मा भाई को बड़ी चिंता रहती है ना भाई तो बोल ही देते क्योंकि स्ट्रीम्स ख़त्म होने के बाद भी लोग देखेंगे उससे इसलिए स्ट्रीम्स को नॉर्मल वीडियोस के तरह क्रिएट करो वो तो कर ही रहा हूँ मैं No sign of anyone. Sorry. भाई ग्राफिक्स में तो दांत देनी पड़ेगी इस गेम की ग्राफिक्स भी तगड़े है भाई इस गेम के तो होंगे यार 2022 में This is where I saw something. Let's make it quick, right? ये साले यार One down. If I can get the main gate open, Talana and Amatis can help me clear out the rest of this place.
अभी जो पहले आया था जो चला गया वो कैसे कह रहा है? अरे बीएमजी भाई जो लोग आ रहे हैं आपको तो ज़्यादातर जानते हैं, ऐसा क्यों? अब उसको क्या बताऊं भाई कि बीएमजी भाई तो चॉकलेटी वो है, जो भी लड़कियां आती है वो जानती ही होती है बीएमजी भाई को ना लोंडो। वो तो तुम लोगों को पता ही है ये बात तो। वो तो तुम लोगों की आलिया दी कब से कह रही थी कि नाल बाकी फीमेल फ्रेंड्स भी आई है स्ट्रीम पर, आज से आना स्टार्ट कर देंगे। मतलब बाकी एक दो को तो खुद ही चैनल सजेस्ट हो गया। ये नया माल बंदा कौन आया था भाई? अभी भी स्ट्रीम पर है ये नया माल बंदा? भाई मुझे हंसी आई भाई ये नाम देख के। अभी नोटिफिकेशन आया ना मेरे पास, नया माल बंदे ने सब्सक्राइब करा है चैनल को। भाई बंदे कैसे कैसे नाम रखते हैं। ठल्ला गुल्ला हो गया भाई, मुसीबत स्टार्ट। रेबस को मारना होगा। I need the two of you. चल चल You make a nice target. Make her pay. We have a man down. Here, Aloy, reload! Take her out! We'll stay here. I'll grab this now. End of the line, Outlanders. That device is gonna call a machine. Now the fun starts. Mind if I do? भाई साहब गोलियां चला चला के छातियां फाड़ देंगे भाई साहब। ओ भाई ओ भाई, अरे भाई अरे भाई, अरे लोंडो ये वाला जानवर है। अरे वो होते नहीं है जो बीच पे पड़े रहते हैं, जो बर्फ वाली जगह पे पड़े रहते हैं, उस स्नेल क्या कहते हैं उन्हें? बेंच भूल गया मैं। जो इधबुलाऊ से होते हैं क्या कहते हैं यार उन्हें? जैसे तालियां बजाते हैं ऐसे रिंग रिंग के चलते हैं, वो वाला जानवर है भाई। ये नाम याद नहीं आ रहा मेरे को।
एल क्या सील्स कहते हैं उन्हें? कुणाल तुम सही कह रहे हो। अच्छा मैं सही कह रहा था, सील्स कहते हैं उन्हें। हाँ थैंक्स अंशिका। All right. I think that's the end of it. Hear that? Here. Door's locked, but that last rebel had a key on it. Freed by Karja. Have we not been humiliated enough? It's not their fault you were locked up in your own prison. I'm looking for information about a Karja soldier. She might have been a prisoner here 5 years back. Her name was Nessa. The Karja Nessa was here. I killed her myself. Nessa. I'll handle this. Go secure the grounds. It's you, isn't it? Nessa, how? It's Why? Rataka. Let me get this straight. You were Nessa. You were brought here as a prisoner during the Red Raids and then became Tenakth? The Karja forbid women from military service. I lived my life pretending, ashamed of who I really was. But the Tenakth measure a soldier only by their strength and resolve. So I took my place among them. Nessa. Rataka. I've mourned you for 5 years. Why didn't you let me know you were alive? I had a new life. I wasn't going back. Not even for you, Amadis. The way Amadis talked about your time together, I thought you'd still care about him. It was 5 years ago. I didn't abandon you. Before the battle, I tried to get Godiah to call off the attack, but of course, he didn't listen. I ended up killing him. Then he got what he deserved. I ran for the battlefield to find you. But you were already gone by the time I got there. I didn't know. But even if I did, I mourned you, and then I moved on. If you were brought here as a prisoner, how did you become Tenakth? I knew it was only a matter of time before the Tenakth killed me and the others who were held captive. But one day, one of their soldiers stopped in front of my cell, asked how a woman had ended up fighting for the Mad Sun King. As he spoke, I realized he was once Karja. Vashav. I heard how he fell at the embassy. He deserved a better death than that. The other prisoners he condemned to death, but he convinced the Tenakth to let me fight for my life. I won through blood and blade. I became Rataka, and never looked back. You were willing to wear a disguise so that you could serve in the Karja army. Do you miss being Karja at all? No. The Red Raids showed me there was no honor in fighting for the Karja. And when my comrades and I were brought here as prisoners, we knew no one would ever come for us. I would have, had I known. It's better this way. Beneath my Karja armor, I found I had the blood of a Tenakth. What will you do now? You've taken back the rot. My squad will ensure it stays that way. So this is it? After everything we've been through, this is goodbye? It has to be. My place will always be here, and yours is back east. I'm sorry that you've suffered. You deserve better than how the last 5 years have treated you. I'll make sure you're granted safe passage out of the lowland. Consider it Nessa's final farewell. At least now you know the truth. Somehow it hurts worse. You must think I'm an idiot. No, I just think you have a lot to figure out. I'll take you back east to the Sendem. After that, I don't know. Talana, I understand. I'm sorry it came to this. Me too. Give me and Aloy a moment.
Are you alright? To be honest, no. What's going to happen between you two? I'm not sure. He clearly has a lot more feelings to sort through, and I won't be anyone's second choice. I want you to have this, for seeing this through with me. No hawk could ask for a better thrush. Or a better friend. So, I guess this is it then. You're heading back east. I think I'll hang around Barren Light for a while, before returning to Meridian. If you find yourself back that way, look for me there. I will. Safe travels, Talana. Maybe I should check in with her the next time I'm at Barren Light. Seems like she could use a shoulder to lean on. I know Amadis must be hurting, but sometimes a bone must be broken again so that it heals properly. Welcome, Outlander. You showed us that Regala's rebellion. An honor to greet you. क्या अंश ब्रदर कहाँ गए? अरे होंगे भाई, वो स्ट्रीम में होंगे, वो नहीं जाते कहीं. Come on, keep it moving. That blade might be blunt, but the real. This is a training pit, right? Yeah, our squads practice close combat drills here. Name's Tanalo. I'm the master of this pit. And I'm sure you've noticed that the pit is filled with red muck. I hate that we have to spar in it, but we don't have a choice. And just like the other clans' pits, the rules here are the same. I offer training and challenges. You can use your spear and a training bow. All other gear stays with me while you're in the pit. If you can complete all of my challenges, I'll let you fight me. And when I win, I'll earn a mark for the enduring? That's right. Once you've earned marks from here, the bulwark and scalding spear, you'll be able to challenge the enduring. The masters at the other pits didn't say much about who the enduring is. I guess you won't either? You want to know more? The sooner you earn 3 marks, the sooner you'll find out. Okay. रोंडो जैसे पहले प्रैक्टिस कंप्लीट करते थे ना, ऐसे इस बार भी करनी है हमें. Damage to a single opponent, break their weapon block. Then, follow up with the destroyer. लाइव चैट में क्या बातचीत चल रही है? तो एक बार मैं कह रहा क्या नया माल भाई कह रहे अरे हूँ भाई स्ट्रीम पर, चिंता मत करो रोज आऊँगा. पहली बार कोई अच्छा गेमिंग चैनल मिला है इंडिया में. The spinning scythe not only hits multiple enemies, भाई it आएंगे clears रोज the आएंगे space भाई. around you. अंश भाई कह रहे हूँ कलेक्सिस. चल Energize your field, then energize your enemy by chaining that energy surge with other attacks. Starting with a powerful attack can be tricky because they're so slow. So use a half-moon slash for speed, then link into other attacks.
यार गेम पे फोकस कर रहा हूँ अब तो 800 वॉचिंग भी आ गई भाई तो This isn't an archery range. You can land a hit. Enough of the bow already. I yield. Ooh, well fought in there. You really know how to knock someone out. Here, this mark is yours. Thanks. That makes 3. Then I think it's time for you to face the Enduring. Will you tell me who they are now? You'll see soon enough. Go to the mountains north of the Desert Clan's territory. The Enduring awaits where the ruins of Metal Wings rise from the mountain. Good luck. And if you're looking for more practice, this pit remains open to you. I know I'd gladly accept a rematch. हाँ पता है अंकल हम कोई हारे थोड़ी हम तो रीमैच भी करने आ सकते हैं आराम से क्योंकि हम तो जीतते हैं हमेशा I'll be off. Until our blades cross in the pit again, then. जब बनूंगा ना अंकल आ जाएंगे दोबारा हराने आपको पिटने ठीक है Yeah. You shouldn't miss this chance to trade. May our blades strike us. अरे हो जा Yes, I can work with this. What are you doing? Envisioning the best armor you'll ever own, child. Worthy of Hikaru's champion. I didn't ask you to make me anything. But I offered nonetheless. You should be honored. Any soldier worth their marks wears armor of my making, even Chief Hikaru. Get me the right resources and I'll craft something that'll make you the envy of all 3 clans. My offer still stands. A soldier like you should only wear the best armor. And that's what you'll get it. Oka's Forge. Nice move. As fast under the water as they are in land.
here. That's strange. Well, nothing's stopping me from taking the boat. Pushing me south. There's no choice but to head for that beach. No one's guarding this side of the ferry either. Where are the Quinn? They're at landfall, I guess. Where do we find it? Should be to the northeast. And shredding jaws were enough. So these are the ruins of San Francisco. An entire city of crumbling towers. And somewhere buried out here is Thebes. I hope Alva and the Quinn can help me find it. बेचारी अलोय कैसे कैसे पार करके आई लोंडो नाव से, है ना। अकेली सब कुछ कर रही है बेचारी। ओए होए होए होए, वाह क्या सूरज की रोशनी आ रही है लोंडो। सूरज की पहली किरण सबसे पहले हमारे पिछवाड़े पे पड़ती है। वही आ रहा है हाथी सा, जो भी है। नहीं हाथी नहीं है, वो कुछ और कोई जानवर है भाई। यस, करे सवारी। Some kind of drone. Is it watching over this area? Might have some useful data. Is that her? How to get The up living there. ancestor. This is landfall, right? I'm looking for Alba. Overseer Bohai ordered us to invite you before him should you approach. Please, come with me. Go. Let him know we're coming. It's
diviner was right. वैसे क्यों देख रहे हैं मैं जैसे पता नहीं क्या होगा। अच्छा वो समझते ना मैं। Overseer Bohai, a stranger just walked through the gate. स्ट्रेंजर कह रहा मैं। I knew Alva would not dare lie. You do look like Sobek. Is Alva here? I need to talk to her. I will consider your request once it is determined what you are. A living ancestor, as Alva believes, or a threat, lurking in such a guise. I am no threat, okay? Back on the mainland, your soldiers fired on me without warning. So you say, infidel. None of those you engaged survived to bear witness. I held off on your squad when... वे लड़ने में लग रहे हैं लोग हमसे। आ गई क्या अल्फा? आ गई लग रहा है, आ गई। उससे बात कर लेना तुम लोग खुद। अलोय कह तो रही तुम्हारे सोल्जर्स ने बिना परमिशन के अटैक कर दिया हम पे, मेरे पे, ठीक है? और तुम लोग मेरे को बोल रहे हो। अबे ये आया नमूना। मुझे लगा वो है ये। May I present our honored CO? So, here she is, our great mystery. Well, Bohai, what have you divined? What is she? A mystery indeed, my CO. How can she appear as Sobek, and yet know nothing of our ways? ज़्यादा नहीं बोल Are रहा। we to believe that a living ancestor was born to this wretched land, an ocean apart from the realm of the chosen? And if so, to what end? I cannot answer. Only she can. But I warn you, no falsehood will satisfy us. Now speak. Why are you here? कह दे मैं रह ले। What is your purpose? अल्वे कह दे मैं रह I'm ले। looking for a place called Thebes. And what do you seek there? Alva told me a little bit about what you're after. I guess you could say I want what you want. A way to heal the world. As I suspected. Tell her. क्या मारने के लिए कह दिया क्या? Thebes, the final resting place of Ted Pharaoh's secrets. It isn't far, but the way is closed to us. Machine attacks have cut us off from the site. Diviner Alva is there, along with a complement of diggers and soldiers. Is she all right? Our scouts tell us that the machine has our people pinned behind their defenses, but they're holding out. Machines, huh? I can help with that. Alva told us that you are indeed formidable. But I have a few questions first. We will answer what we can. So you found Thebes. How? The ancestors revealed it to us not long after we made landfall. Almost a year ago. Through a scrap of ancient data discovered by Alva and verified by myself. It contained details about the construction of a great underground palace. Where, exactly? Close. Beneath the Great Pyramid in the ruins beyond. Figures. Ted loves his pyramids. Have you been inside? No. That has been a problem, one of many. And we will solve them all in time. Getting back to the site is the one at hand. I hope you're as effective against machines as Diviner Alva suggested. So, Alva reports to you. I was chosen by my colleagues on the Board of Overseers to supervise data retrieval on this expedition, yes. And you're in charge of the expedition? He is far more than that.
You are addressing the cousin of the Emperor of the Quinn. Heir to the vast holdings of the Great Delta, the first CO in 5 generations. All she needs to understand is that I am the authority here, and my will is to attain the secrets of Thebes. Mine too. We're in luck. What exactly are you looking for inside Thebes? I thought Alva brought back the data you needed. We risked much to cross the ocean. Therefore, we must unearth every possible link to the legacy while we are here, especially one as important as Thebes. We will not sail back until I have plundered its secrets. What kind of machine has your people pinned down near Thebes? A Thunderjaw. We've dealt with them before, but this one is... Tougher, stronger, and it has black armor? Yes. How did you know? Doesn't matter. Won't be easy, but I can take it down. Then destiny shines upon us, as I knew it would. A living ancestor now walks among us, and she will help me attain the secrets of Thebes. Resupply here if you must. Then on to Thebes at the base of the pyramid in the ruins. We will follow when our scouts confirm you've cleared the way. तुम लोग के लाइव चैट पढ़ता हूँ मैं, जहाँ से छोड़े गए। Your shoulder doing all right? Absolutely. और अच्छा काव्या बोल रही है, और भाई मैं तो रात को ही आ पाऊंगी क्योंकि कॉलेज होता है इसलिए बिजी रहती हूँ पूरा दिन। कोई बात नहीं, रात को ही आ जाओगे वही काफी है। स्किल्स कहते हैं उन्हें कुणाल, तुम सही कह रहे हो, ये तो पढ़ लिया था कुणाल। बाकी मैं रात को ही आ पाऊंगी। अर्पिता भी बोल रही है, गरिमा भी बोल रही है, और मैं भी। आलिया बोल रही है इट्स ओके बट रात को आओगे तो वही बड़ी बात है। सही बात है। कृपा बोल रही है मैं तो पूरे टाइम आऊँगी, बट बस सीरीज वाले एपिसोड्स में आऊँगी, मस्ती वाली स्ट्रीम में नहीं आ पाऊँगी। ओके, जैसा तुम लोग का इंटरेस्ट है यार, अच्छी बात है। सीरीज वाले एपिसोड में आओगे तो और अच्छी बात है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि अभी सीरीज वाला एपिसोड ही देख रहे हो तुम लोग। क्या ये कलवा कुछ ज़्यादा ही चमचा है इसका? हाँ सही कह रही हो कलवा, सारा फालतू बोले जा रहा था कलवा, वही तो बोल रहा था कलवे को मैं। लोए कल्लू कायदे में रह ले। हेलो, ये चलती कैसे है? एकदम गुंडों के स्टाइल में चलती हुई वैसे है भाई, अलग ही दिख जाती है जो चलती हुई। जब दूर से दिखा रहे थे कैसी लग रही थी हेलो चलती हुई भाई साहब। We did, but now we're moving them to guns. Okay. Off to the big pyramid to fight the Thunderjaw. समझ गया था गेम वालों का इशारा, जब मेरा वो आगे नहीं जा रहा था ना घोड़ा गाड़ी, मैंने को कूदना पड़ेगा। A barbarian! Run, stranger! There's a killer machine about! Yeah, that's what I'm here The for. machine will kill you! There you are. I guess we're doing this. चिल्ला रहे हो मशीन हमें मार देगी। अरे हम मार देंगे इसे, गाते लौंडो कमाल। अरे बहन चो, साला ड्रोन टाइप के अटैक करता है।
चल 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 नो एमो तो मेरा वो हेल्थ का भी 0 हो गया यार। जीरो तो वैसे कब से ही है बट फिर भी बाकी बाबा जी की बूटी जिंदाबाद लौंडो मैंने पी ली। चेक 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 ने बड़े रोबोट को राना मशीन को राना भाई आसान बात थोड़ी है। रा देंगे लौंडो पर फिर भी हम कैच बाबा जी की बूटी का असर खत्म हो गया भाई। खत्म कर दिया रोबोट ने बट लौंडो हमने ये खत्म कर दिया इसको। हमारी बाबा जी की बूटी का असर खत्म करा हमने इसको खत्म कर दिया। तो तुम्हारे बीएमजी भाई वेस्ट नहीं जाने देते किसी चीज को। प्राप्त करते हैं। Hail machine hunter! Speak with us! You killed that machine! Your CEO sent me. I need to speak to Alva. By all means, then. Aloy! Open the gates! Over here! Alva, I'm glad you're okay. Oh, you got rid of that machine. Impress हो गए। What are you doing here? There's something inside Thebes that I need. I went to landfall. I met your CEO. We came to an agreement, kind of. And you're going to help us get in? I guess so. The whole thing was a little tense. There's something off about that guy. And I don't understand what he wants from Thebes. I thought we found the data that your people needed back on the mainland. That data will take us years to sift through. The CEO wants faster results. Aloy, you have to be careful. He's... There they are. The legacy tells us that Elizabeth Sobek helped the ancestors cast aside all obstacles. And so it has been today. You have been true to your word. I'm pleased. Thebes awaits us below. Shall we? Quite an excavation. Much of this was flooded. We had to pump a great deal of water out. Behold, the door to Thebes. A door like no other. Well, you're right about that. It's designed to open for only one man. Ted Farrow. But the legacy tells us that he worked closely with Sobek. He trusted her. Surely she could open the door, and so surely can you. Not gonna happen. At least not from this side. You said she was a living ancestor with Sobek's eternal essence. If I may, Pharaoh, great as he was, did not build his palace alone. We know this from scraps of data we found, the ones that pointed to this location. And we found evidence of passages below. Maybe they were built to aid construction. Or for servants. We can't reach them. The way is flooded and they're too far underwater, but... Yeah. I can reach them. There might be another way in down there. You see? With Sobek, there is always a way. Then do what you must to get us inside.
huge. It goes all the way down to the bottom. There's a rupture up there. Maybe a way in. Yeah, this could get me inside. Okay, looks like this tunnel leads deeper into the structure. There's gotta be a way to start that turbo around here somewhere. Stop the turbine. Good. हेलो 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 ढूंढो, आवाज़ आ रही है मेरी? आई होप आ रही होगी। ठीक है, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से अभी छूट गई थी गेम, अटक गई थी स्ट्रीम, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम पानी के अंदर थे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ एक्चुअली में, लाइट चली गई क्योंकि बाहर तूफान आ गया बहुत ही तगड़ा, बट वाईफाई अभी भी चल रहा है लोंडो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, छूट ऐसे ही चलता रहा भैया ऊपर वाले की दुआ से, क्योंकि लोंडो अभी भी ना बहुत गेम पड़ी हुई है, अभी भी 3 घंटे की गेम पड़ी है। ठीक है, तो इसलिए वाईफाई ऐसे ही चलता रहे तो अच्छी बात होगी, और बाकी मेरा इन्वर्टर चलता रहे तो अच्छी बात होगी। इन्वर्टर पे चल रहा है अभी सब कुछ, जैसे पूरा दिन इन्वर्टर पे चला था ना सब कुछ, स्ट्रीम व्रीम दोपहर की, पूरे दिन की, शाम की, फिर से इन्वर्टर पे चलेगी स्ट्रीम, कंप्यूटर मतलब। ठीक है, वाईफाई सब कुछ पूरा घर, तो इन्वर्टर ओवरलोड ना हो तो दुआ करना तुम लोग। ठीक है, बाकी वाईफाई चल रहा है तो सबसे बड़ी बात है। बाकी रही बात पूरे घर की, तो पंखा वंखा बंद हो गया, तुम लोग सुन रहे होगे मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है अब, है ना, क्योंकि घर में मैंने सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ। ठीक है, कूलर वूलर फ्रिज व्रिज सब बंद कर दिया भाई साहब। बाकी मेरे पापा गर्मी में सो रहे अब। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने सब कुछ बंद कर दिया लोंडो। ठीक है, ताकि मेरा कंप्यूटर चल सके और वाईफाई चल सके, नहीं तो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर गेम बंद करनी पड़ जाएगी, और मैं वो नहीं चाहता हूँ, है ना, कि अभी बहुत गेम पड़ी है और लाइट का कुछ पता नहीं कि कितनी देर में आएगी, है ना, इसलिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैं खुद भी गर्मी में बैठा हूँ और मेरे पापा भी गर्मी में सो रहे हैं अब। ठीक है, सब लोग गर्मी में सो रहे हैं, तो भाई पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं इतनी देर में ही, पता नहीं आगे की स्ट्रीम कैसे करूँगा लोडो बिना पंखे वंखे के। ठीक है, बट करनी तो पड़ेगी लोडो, है ना, कोई बात नहीं, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। अभी भी 812 वॉचिंग आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोडो। ठीक है, इससे पहले लोग चले जाएं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अभी भी 3 घंटे की गेम रह रही है। तो ठीक है लोडो, हम पानी के अंदर थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे छूट गई थी गेम, वो करते हैं कंटिन्यू। Stop the turbine. Good. पसीने पसीने हो गया हूँ भाई, आंखों में पसीना, मुंह पे पसीना, मुंह पे पसीना, हर जगह पसीना आ चुका है इतनी देर में। आगे का टाइम पता नहीं कैसे बताऊंगा लोंडो में गर्मी में। कोई बात नहीं, कर लेंगे लोंडो। Here I am again, hiding in the gym, writing to stay sane in this crazy place. I can't believe Grigori's dead. The living area. Our so-called spiritual leader was fine yesterday. एसी पंखा बंद करके मैंने वीडियोस बनाई है, रिकॉर्ड करी है अलमारी के अंदर घुस के, बड़ी गर्मी में वो भी। ठीक है,
तो स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम भी कर लेंगे लोंडो, है ना। वीडियोस बनाने में इतनी गर्मी झेली है, So this is the way to the main door, so I can let the Quinn in. तो स्ट्रीम करते हुए भी झेल लेंगे। Look at this place. It's pretty fancy for a survival bunker. बाकी भी Looks like some kind of access control. बड़ी एक्सेस कंट्रोल लग रही है। बाकी वर्मा भाई क्या कह रहे थे? एल्वा क्यूट है यार, तेरी बहन को बताऊंगी रोहन ज़्यादा क्यूट लगती है तेरे को लड़कियाँ। The door is open. Destiny is upon us. I knew you could do it. What's going on? The CO is preparing to enter Thebes. Oh, why are you dressed like Ted Pharaoh? I am Pharaoh, renewed. My essence is the same as his. Across the years, across the generations, his soul is my soul. His will is my will. We are Acha. sundered in only one way. I need his final testament, his deepest secrets. And now that the door is open, those secrets are within my grasp. When I have them, I will be complete, as he was. I will have everything I need to save our homeland, and as Pharaoh did, the world. ये फैरो की कॉपी निकला, हाँ वही तो। Okay. I think there's some confusion here about who Pharaoh really was. No one knows better than I who he was, who he is. Me. The Renewer, greatest of the ancestors, the man who saved the world. And you. You understand, Sobek. You are her, Pharaoh's harbinger, his assistant. Come. We will descend into Thebes together, as it should be. Bring her the raiment. Raiment? As he is Pharaoh, you are Sobek. For an occasion this momentous, shouldn't you wear proper business attire? Whoa. No, 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 no. No, I am not wearing that. No way. You will wear the proper attire to mark this moment. Or what? ओ भाई It is साहब, said Sobek valued life above all else. Is this true? Fine. I'll wear your raiment. हमें ये कपड़े पहनने हैं। पलक क्या बोल रही है? ये एलोई को असिस्टेंट बोल रहा है चूतिया कहीं का। अरे पलक शांत शांत, इतना भी नहीं घुसना स्टोरी में। घुस रही हो अच्छी बात है, बट गुस्सा शांत के पहन के आ गई। इसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा एलोई को बिल्कुल भी। ऐसे कपड़े पहनने की कहाँ आदत है? Shall we proceed? सोबेक की तरह बन गई है भी लोंडो को, फैरो की तरह बना हुआ है तो इसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा एलोई को बिल्कुल भी इन कपड़ों में। Look at this place. The grandeur. Pharaoh's domain. मैंने ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि लाइट जाए तो मेरे कमरे का सब कुछ। डोंट डू, आई एम बैक, आई एम बैक। भाई मैं नेट से आया हूँ वापस, ठीक है लोंडो, तो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। नेट से यार स्पीड नहीं आ पा रही है इसमें इतनी, बट मैं नेट का रिचार्ज कराया अभी, वाईफाई तो चला गया लोंडो। एक मिनट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ लोंडो क्या हेल्थ दिखा रहा है स्क्रीन की। शिट, एरर। एक मिनट यार, रिफ्रेश हो जा भाई। तो बहुत कम दिखा रहा है यार फ्रेम रेट लोंडो। तुम लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार बताओ, एक बार जल्दी से। मुझे पता है गोला घूम रहा होगा,
काफ़ी कोचिंग कम होती जा रही है मेरी। शिट यार शिट, मेरी किस्मत भाई सच में किसी बैंक के लोड़े ने लिखी है भाई इसमें भाई। तो लोंडो थोड़ा ठीक हो गया, अब ग्रीन ग्रीन हो गया ओबीएस में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये ग्रीन ग्रीन कितनी देर तक रहेगा फ्रेम रेट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं लोंडो, जहाँ से गेम छुट्टी थी ना वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं ऐसा जुगाड़ करके बैठा हूँ कि भैंचो लाइट जाए तो सब कुछ बंद हो जाए, बट मेरा पीसी और वाईफाई बंद ना हो। बट भाई तूफान ऐसे है ना, ऐसा है ना तूफान, पहले लाइट गई, ठीक है, और अब वाईफाई चला गया। मैं तुम लोगों से कह ही रहा था कि दुआ करना वाईफाई ना जाए, और वाईफाई चला गया। लिख गई होगी कोई तो, लिख गई होगी कोई तार वाईफाई की बाहर तूफान में। तो लोंडो मैंने वाईफाई का रिचार्ज करा, ओ वाईफाई कह रहा हूँ, मोबाइल का भी नेट कराया, रिचार्ज कराया मैंने अभी, नई जियो का भी, ठीक है। तो भाई मैंने 5G पे स्विच करा था, बड़ी चूतिया स्पीड आ रही थी भाई जियो के 5G पे। ऐसे तो बड़ा अच्छा चलता है, ठीक है, बट स्ट्रीम के मामले में स्लो चल रहा साला। अब मैंने 4G पे स्विच कर लिया तो ठीक है, ग्रीन ग्रीन हो गया भाई इसमें ओबीएस में सब कुछ। तो ठीक है लोंडो, अब जहाँ से गेम छुट्टी थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं अपग्रेड कर रहा था एलोय को, है ना। रिचार्ज कराया मैंने अभी फ़िलहाल, अनलिमिटेड वाला। कहने को अनलिमिटेड है, कहने को अनलिमिटेड है, वैसे तो 25 GB मिली है लोंडो मेरे को। आके अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, बार बार टाइम वेस्ट हो जा रहा है क्योंकि मुसीबतें आ जा रही बार बार, है ना लोंडो। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं जहाँ से गेम छुट्टी थी हमारी, ठीक है। अब ना आए कोई दिक्कत तो अच्छी बात है, बाकी लोंडो बीच में थोड़ी स्ट्रीम अटक अटक के चल सकती है क्योंकि नेट से चल रहा है, ठीक है, वाईफाई से नहीं चल रहा है, पहले बता दूँ, 10 बार ही बता रहा हूँ मैं बात। नेट का रिचार्ज करा है मैंने, इसलिए आया हूँ वापस, क्योंकि वाईफाई तो चला गया तूफान की वजह से, तो इसलिए वापस आ पाया हूँ। तो मैं नेट की वजह से आ पाया हूँ, और नेट से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि नेट की स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए थोड़ा स्ट्रीम अटके तो एडजस्ट कर लेना। बाकी ज़्यादा देर अटकी रहे तो तुम लोग बता देना, ठीक है मेरे को, बाकी मैं चेक करता रहता हूँ फ़ोन में साथ ही साथ। तो ठीक है लोग कंटिन्यू करते हैं गेम अपनी। बाकी रही गर्मी में बैठने की बात, तो मैं जस्ट कर लूँगा लोगों, कोई बात नहीं। Somewhere in here, Pharaoh left his secrets. Let's go find them. Perhaps we should leave guards behind to cover our enemies. Indeed. Now let it be done. I think this way might lead down. Excellent. Remember every detail of his, Bohai, for posterity. It will be its own chapter. Brianna told me that Grigori hacked into restricted files and... Find anything interesting? I can't make sense of it yet. अरे हाँ बाकी बता दो तुम लोग, क्या लिया थी, सही कह रही है, क्वालिटी क्लियर आ रही है ना। I tried to warn you. Yeah, sort of. I'll explain everything if we survive long enough. क्वालिटी क्लियर आ रही है ना। Those certainly look threatening. Statues. The guardians of Pharaoh's domain. Those aren't statues. Look out! Get the CO out of here! Guess it's just us then. Cover! We have no choice! Not a bad hit!
अरे वापस आ गए लोग भाई, 815 लोग हो गए वापस, वॉचिंग 815 हो गए वापस। Thanks. Where's Overseer Bohai? Brianna didn't wake up this morning. A wise choice. We can't She's afford to gone. lose any more diviners than necessary. Just like Grigori. So, I'm no looking more up at the delays. giant. We must proceed. Ever deeper we go. What is that? A reclining throne, attached to some kind of apparatus. I wonder what it does. An impressive setup. What is it for? I'm sorry, CO. I don't know. My focus can't read the data here. Made a minor adjustment to the gene therapy regimen and added a new cocktail to treat the symptoms caused by the mutations. Hopefully, there will be some stabilization after the next treatment. God knows what Ted'll do to us if there isn't. The early results were so promising. No signs of aging, no cellular degeneration, but now... Oh, if only I had access to my old lab in Bangkok, or my old colleagues, or my old liquor cabinet. Stop it. Got to stay positive. For Kenya. You saw something. I could tell. Did the data explain what Pharaoh used this device for? I think he was undergoing treatments to live longer. A lot longer. Really? Could he still be alive? Don't be foolish. If he were alive, he would have kept his essence. It would not have been passed down to me. Remember, he was the renewer. Of course, he would have stopped at nothing to grasp the secrets of life and death. But not for himself. Everything he did was for a new beginning. For us, for the Quen. And for his true heir, me. You know, I'm starting to think you're right. You do have a lot in common with Ted Pharaoh. I knew you would see, in time. Let us continue. His secrets await. साला ज़्यादा चल बना रही है ये, साला ज़्यादा चल बना रहा है. Is that a small office for a minor functionary, perhaps? You did this for him? You put, like, off switches in everyone's heads? Kenya, you mustn't judge me. I had no choice. If I said no, what would he do to us? What would he do to you? You're my little girl. I was trying to keep you alive. For what, Dad? Seriously, why? So we can be trapped in this underground nightmare? You know what we have to do. Did you find a recording, Aloy? Yeah. Look at all this equipment. We are getting An closer to the automated heart of this place. geothermal energy plant right under the city of San Francisco. A marvel. Even I can run it, and let's face it, I was always more of a visionary than an engineer. Which is why I had the foresight to insist on the inclusion of a very unique feature. Just in case anyone ever tries to steal my cheese, so to speak. I'm going to look for another way in. Good idea. It's worked before. Very well. Yeah. Get to it. रोंडो में पसीने में नहा रहा हूँ भाई पते ही. Is that a vent of some sort? Not a bad idea. सोचो एक बार इमेजिन करो भाई, तुम्हारे बेंजी भाई पति पसीने में हो रहे भाई, मुंह में पसीना भैंचो, आंखों में पसीना भैंचो, हाथों में पसीना, कैसे कैसे कंट्रोलर मैंने पकड़ रखा है भाई. बट मैं कैसे कैसे खेल रहा हूँ, फिर भी देख रहे हो कितनी मुसीबतें आ रही है, बट मैं फिर भी स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई.
access Ted's files from here. मेरे जितनी डेडिकेशन किसी बड़े यूट्यूबर में हो तो बताना भाई, कभी इसी में नहीं मिलेगी मेरी जितनी डेडिकेशन भाई। ओके कह सकता हूँ मैं यार। तो मेगा डाउनलोड There. Omega clearance. Got it. वाईफाई चला गया तो नेट का रिचार्ज करके स्पेशल स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, बताओ जरा। What do you have to say for yourself, Ted? और दगदग हो रहा है मेरे। Along with his kid. Found him on the floor of his office this morning, holding hands. Must have poisoned themselves. I never would have put them to sleep. She was just a girl, for Christ's sake. I offered them life, and this is how they repaid me, by leaving me all alone. But I guess I've been alone since this whole thing began. Alone in bearing the burden. For the past. For the future. Same old Ted. No matter who dies, he's the one feeling sorry for himself. Liz's future. Liz's children. Someday they'll come, and I'll be here to greet them. मेरे दगदग इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई नेट से कर रहा हूँ। नेट का कुछ पता नहीं कब कम स्पीड दे दे और स्ट्रीम बंद हो जाए। I just need some time for the mutations to calm down. Time. And energy. Some tests of the reactor can give me what I need to grow strong again. To get my shit back together. So I can greet the kids. They're gonna need me. My advice. My guidance. And then I won't be alone anymore. Pharaoh's secrets. Are they here? Not the ones you're looking for. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Are you mad? I haven't come all this way to stop now. At last, Pharaoh's legacy is mine. Is that? It's him. Burn it to ash. Wait, no. Pharaoh has it rigged to melt down. Kill them too. No witnesses. Hit them from range. I'll take her out. Along with his kid. अच्छा 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 क्या लिया, क्या बोल रही है? होराइजन जीरो डॉन के फाइनल एपिसोड में भी दिक्कत आई थी स्ट्रीम करने में, और अभी होराइजन फोरबिडन वेस्ट के फाइनल एपिसोड में भी दिक्कत आ रही है स्ट्रीम करने में। वही तो पता नहीं क्या है यार, लोंडो टोना टोटका कर रखा है भाई किसी ने। मतलब हम जब भी फाइनल एपिसोड स्ट्रीम करते हैं होराइजन गेम्स का तो दिक्कतें आती है। होराइजन जीरो डॉन के भी फाइनल एपिसोड में कितनी दिक्कतें आई थी स्ट्रीम करने में, है ना। उस गेम को भी 36 घंटे लगा दिए थे हमने ख़त्म करने में। क्यों दिक्कतें इतनी आ रही थी? 6 घंटे की खिंच गई थी वो गेम भी, उसका फाइनल एपिसोड भी मतलब, ठीक है। और ये गेम का भी फाइनल एपिसोड बेंचो लंबा खिंच रहा है। क्यों दिक्कतें इतनी आ रही है पता नहीं क्या है। गेम दोनों इतनी अच्छी है जबकि ये बेंचो छेद दिया भाई हमने। Rigged the reactor to overflow if he dies. We have to run. अल्लाह 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 भाई कितनी जल्दी जल्दी फुक रहा है भाई नेट।
जियो वाले नाम का अनलिमिटेड देते हैं भाई। $25 है वैसे कहने को, और नाम लिख रखा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड घंटा बेंचो। मैंने 4G पे स्विच कर रखा है और दिया उन लोगों ने अनलिमिटेड 5G पे है। वैसे कहने को अनलिमिटेड दिया है, 25 GB दिए है कहने को तो इन लोगों ने। फिर भी कहीं ऐसा ना हो अभी बंद हो जाए नेट मेरा। बेंचो मैंने 4G पे स्विच कर रखा है। अबे 5G चल ही नहीं रहा बेंचो, वैसे तो चलता है 5G बेंचो, पता नहीं क्या है। 4G बेस्ट लगता है भाई मेरे को, इसलिए भाई मेरे को 4G बेस्ट लगता है। ये ले जब पसीने आने लगे ना, बस बोलने में दिक्कत आने लगी मेरे को। चल वो तेरी हेल्थ चिट चिट, मेरे पास वो भी नहीं है चार्ज करने के लिए। रुक जा रुक जा रुक जा, हो गया हो गया हो गया हो गया, हो जा हो जा हो जा हो जा। यस बताता हूँ तेरे को साले। ये ले ओ शिट, ले भाई ये तो गया, जुलस गया। ले ज़्यादा चलबला बनता ना, ज़्यादा चलबला आता है। ले बेंचो मर, बेंच छोड़ के मर 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 मारा बेंचो। अच्छा बच गया भाई, बच गया। अब तो गया बेटे तू। ले बेंचो, ले भाई ज़्यादा चलबला रहा था ना, मरा बेंचो कुत्ते की मौत। ज़्यादा फैरो बन रहा था, फैरो फैरो हो गया इसका। पैरों का पैरों ही नहीं बचा। We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. But where's the CO? He's gone. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. I see. You must think I'm eminently stupid. What? No. No. The CO was an entitled egotist who twisted our beliefs into a sickening, self-serving fantasy. And you expect me to believe he sacrificed himself for scraps of data? It's time for the truth, and it better be convincing. Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Hold on. You're right. To be honest, the CO screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But we really did find something down there that will help your homeland. If I can take it and use it,
Now, if I have to, I will fight my way out of here, but it doesn't have to be that way. You can just let me go. And then take credit when things start to improve. Success certainly does sound better than failure. It seems then that our destinies are intertwined. Landfall is open to you. If it will help your cause, you may come and go as you please. But Alva must join you and report back on your efforts. Fair enough. Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be thorough. नमस्ते भाई सबको नमस्ते. हाय हेलो I सबको. thought he was going to have us killed. And instead, I get to join you. Glad to have you. But you're going to need a little help to reach our base. Varl, I made a new friend. I need you to meet her at the Quen ferry and escort her back. On it. Can't wait to meet her. Trust me, you'll love it there. Varl will give you a better focus and all of the data you could ever want. Head to the ferry. I'll join you back east as soon as I can. A diviner must follow the truth, wherever it leads. I'll see you there. चलो वे लोंडो में एक और साथी मिल गई, एल्वा, जो कि हमारी टीम ज्वाइन कर चुकी है. Now that I have Omega clearance, we should have what we need to capture Hephaestus. But before I head to the ferry, maybe I should stop by Landfall. With the CO gone, maybe more Quen will be willing to talk. Might be worth looking around the island, too. I gotta change out of these clothes. I can't believe the CO made me play dress up. उसने वाल को कह दिया फोकस से कॉल करके कि तू उससे मिल लियो. हमारी नई दोस्त से एक नई दोस्त बनाई मैंने. एलोय ने कह दिया. मैं कपड़े चेंज कर लूँगा, कर ही लेता हूँ. ये ठीक लगते हैं भाई अपने कपड़े. क्या गर्मी में भी. और क्या कह रहे हो वर्मा भाई? सल्यूट है BMG भाई आपको. इतनी ज़्यादा डेडिकेशन, बिजली और वाईफाई जाने के बाद भी स्ट्रीम कर रहे हो. थैंक्स भाई. वही तो समझा. इससे बात करते हैं. Aloy, well met. We've been briefed on our mission and are ready whenever you wish to head to Cauldron Gemini. Were you able to finish the new arm Gaia was helping you with? Indeed. I was hoping we could discuss it, if you have a moment. You wanted to talk about your arm? Indeed. It's time to test it. And I want you to be there. Okay. How are we doing this? Not how. Where? Will you meet me where we felled Regala's tremor tusk? Right where the river bends? Sure, if you want, but I'm not sure I understand. You'll see when we get there. I promise. Then I'll let you know when I get close. You have my thanks, Aloy. Have you spoken with Alva? The Quen is peculiar. Nothing like a Tenakth. Her mind is sharp, that much is certain. But it's hard to imagine her surviving in the wilds. Trust me, she's tougher than she looks. I will take your word for it. How are your studies going? I wanted to learn more about the world of the Old Ones. And? I looked up this pharaoh Gaia said you went looking for, and learned about the plague of machines he unleashed. To think that the ancient world was wiped out by a mistake. A single miscalculation. There is no glory or honor in such a fate. Only hubris and pointless death. That about sums it up. So you want to test your new arm, and you're not going to tell me how? It's a surprise. Okay. Keep your secrets. I have to go now. Then do not let me keep you. Like I said, I'll call you when I'm close to Regala's old outpost near the bulwark. May the Ten guide your way.
There she is. I hear you found Thebes. How was it? Maniacs, lava. What's not to like? I'll remember that next time I go traveling. At least I got what we needed to trap Hephaestus. Good thing I got my gear ready then. I should get going. As soon as you want us heading out to those cauldrons. I'll give you the heads up. क्या गर्मी में भी और स्पेशल 4G नेट से मोबाइल के वाह मेहनती हो आप आपके जैसा गेमिंग यूट्यूबर कोई नहीं है बीएमजी भाई पूरे हिंदुस्तान में इकलौते हो अरे थैंक यू भाई थैंक यू वंश भाई क्या कह रहे हैं बीएमजी भाई आपके पास बहुत डेडिकेशन अरे थैंक यू नया माल भाई क्या कह रहे हैं आज ही आए और आज ही दिल जीत लिया मैंने अच्छा पहली बार Hey, Kotalo. I'm by the tremor test site, where we agreed to meet. Want to test that new arm of yours? I'll be there shortly. चल भाई इसका इंतजार करते हैं क्या पहली बार में ही दिल जीत लिया भाई आपने Thank you for waiting. Maybe now you can tell me what we're doing here? Not just yet. Follow me, please. करते भाई फॉलो भाई नया वाला भाई पे कह रहे हैं कि पहली बार में मैंने दिल जीत लिया उनका Someone's being awfully mysterious. You took your sweet time telling me what you wanted to do to the bulwark. Consider this my revenge. Fair enough. क्या बीएमजी भाई यू डिजर्व मोर सब्सक्राइबर एंड वॉचिंग अरे थैंक यू यार अच्छा लगा भाई पहली बार आए हो This is it. पहली बार में खुश हो गए Oh, you'll see. Come. All right, talk to me, Kotalo. I wish to test the arm on that. It has menaced the valley for some time. Killed more than a few of the Sky Clan. But no longer. I'm honored to help. After you. Let's see how this thing likes the taste of metal. Well, I think it's safe to say the new arm works fine. Agreed. Then why are you taking it off? This is what I am now. What I overcame. Anything else feels wrong. Like a disguise. I'll use the new arm when I need it, but the rest of the time, I will simply be myself. I wouldn't have it any other way. You have my thanks for doing this with me. Here. Something to mark our victory. Thank you. I'll see you later then. The Ten be with you, Aloy.
Snow falling. Well, only a matter of time. The Enduring is supposed to be around here somewhere, near an ancient plane. Now that I have all 3 marks, I can challenge them, whoever they are. There's the plane. I must be close. That's the Enduring. And she's sleeping? Hello? हो रहा है तो अरे उठ जा बे Must have dozed off again. Oh, aren't you a wild flame? Are you the Enduring? That's what they call me. Azureka the Enduring. What do they call you? A lot of things, actually. But my name's Aloy. I heard you're the best fighter among the clans. But you're not what I expected. We can't all be as handsome as Hikaru, now can we? I earned 3 marks from the training pits. I was told to come here and challenge you to a duel, but do you still even... Ha! Here we are. Now then, Aloy. Marks? I'll add it to the pile. Come, sit. Lizard? No thanks. Not good to fight on an empty stomach, you know. But now I know you're direct. Good. To business, then. Come, follow. This is a pretty steep climb. I'll just be glad you don't have to carry me on your back. You know, there've been quite a few storms blowing through here over the last few months. Nasty things. Blustering about and making a fuss. आंटी कुछ बोलेगी तो मैं फिर लाइव Here we चैट करूँ are. अच्छा पहुँच गए Let's begin. अच्छा शुरुआत करें इसलिए बोल नहीं रहा था मुझे पता था आंटी कुछ बोलेगी फिर मैं लाइव चैट पढ़ूँ क्या आज पता चला कामिया तेरी इतनी तारीफ क्यों करती है सच में तू बहुत हार्ड वर्किंग है कुणाल अरे अरे इतनी भी तारीफ मत करो यार मेरी पता नहीं था Aloy, the pit awaits. तारीफ Now करती listen है up. You're allowed your spear and a bow only, nothing else. We fight until the other yields. Ready? Wait. I have a couple of questions first. Should have asked back at the fire. Could have had a snack. Go on, then. Why do you live all the way out here, by yourself? If you really want to know, defeat me. The pitmaster said you only train the best fighters. Like who? All of those boys, for one.
Poor Varrock must still be brooding over his loss. Before them, Hikaru, some 20 years ago. A few of his marshals have found their way to me over the years. All went home with bruises. What about Regala? Ah, that one. She came to me, demanded her duel, as was her right. But I refused her. The only one. I knew any lesson of mine would be burned away by her rage. All right. Let's do this then. Don't hold back, Aloy. I won't. पता नहीं था कामिया इतनी तारीफ करती रहती मेरी, आज पता चला। क्या नाइस डेडिकेशन, यू आर रियली वेरी वेल, थैंक्स काव्या। अंशिका ने कुछ राज की बात बता दी आज से, कहते हैं ना बहन लोग सच्चाई बता देती हैं आपस की। क्या प्राउड है मेरे को, हम अच्छा प्राउड है हमको कि तू हमारा दोस्त है कुणाल। अरे रे थैंक्स अर्पिता, आज तुम लोग आए तो तुम लोग को आज पता चल रहा है, नहीं तो मैं तो कब से मेहनत कर रहा हूँ। क्या भूल मत जाइए कुणाल हमें मिलियन सब्सक्राइबर होने पर। अरे करीमा अभी कहाँ, अब मैं नहीं भूलता भाई किसी को, 1 लाख फॉलोवर होने पे भूला मैं किसी को। अरे भाई आए थे अपने, नमस्ते कर रहे थे, मैंने उनको नमस्ते करी तो थी, भाई संट हो गए, फिर पता नहीं चलेगा शायद भाई नमस्ते करके। क्या शिल्पा कह रही है अब पता चला वर्मा तू बीएमजी भैया का इतना बड़ा फ़ैन क्यों है। वर्मा भाई कह रहे अरे हमारे बीएमजी भाई है ही इतने मस्त, इनका तो कोई भी फ़ैन बन जाए। अरे भाई वर्मा भाई, अंश भाई क्या बोल रहे फ़ैन का एसी बन जाए। अरे भाई फैन वैन नहीं, जो भी बनना है भाई मेरे कमरे में आ जाओ बनने। Someone must have trained you well. बहुत गर्मी लग रही है भाई, Many लाइट गई भी है। challengers have trained with me over the years, each one the same as the last in one way or another. But you're quick, persistent, stubborn. You fight as someone who has always had to stand alone to survive. I know it as I know myself. You may not be of my blood, but you are of my blade, cut from the same steel. So here is my wish for you, Aloy. Do more than just survive. Flourish. The world will be better for it. I'll do my best. I know you will. Now, let me see that spear. ठीक करेगी, सेपरेट करेगी क्या टकली आंटी? टकली आंटी है। Pretty thing, but I can make it better. क्या बेटर बनाएंगे इसे? देखते हैं। एलोय बोल रही है केयरफुल। मेरा हथियार है। Thank you. टकली आंटी। You've had a hard journey for one so young, and you have much more to do still, I think. I'd like to believe I've had some small part in preparing you. You have. And if I wanted to train with you again, you'd be most welcome. आंटी ने करा है क्या? आंटी कह रही अपग्रेड कर दिया मैंने और स्ट्रॉन्ग कर दिया। आंटी ने तो कुछ नहीं करा। आंटी चूतिया बना रही है भाई हमें। भाई ये टकली आंटी वो सियाणी है भाई, चूतिया बना रही है। ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं मैंने बड़े बेंच। गाली नहीं कुणाल, सारी लड़कियां दोस्त आई है बेंच, सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। अब ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई, लड़कियां भी हमारे सब्सक्राइबर बन रही हैं। शिल्पा तो थी, काव्या भी आ गई है। नाइस। अब थोड़ा मैच्योर होके स्ट्रीम करा करेंगे, थोड़ी मैच्योर बातें करा करेंगे, मतलब गाली गलौज नहीं इतना। बाकी ज़्यादातर लोग तो रात को ही आएंगे है ना। Welcome back. Aloy, I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 hours.
Each hour increases the risk of detection by the Zeniths. सेटअप क्या करें? 35 घंटे बोल रही है तो. 2 cores. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the Zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Okay. इसने बोल दिया कि बीटा को कन्विंस कर सकता है तू जिमिनी में आने के लिए, जैमिनी जो भी नाम है, ठीक है, आने के लिए. तो वाल कह रहा है ठीक है करता हूँ मैं कन्विंस, मुझे नहीं पता वो मानेगी नहीं मानेगी. तो नोटंकी आवाज है ना बीटा लोंडिया, तुम लोगों को पता ही कौन है बीटा लोंडिया. वो हर चीज के लिए मना कर देती है, उसकी गांड फटती रहती है. बात करते हैं. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. ले. We don't have a choice. और कोई चॉइस नहीं है भाई, मैं कन्विंस करना पड़ेगा, उससे मनाना पड़ेगा. ये बैठी नल्ली. Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. अबे सुनी नहीं रही? वो चूतिया यार लगी भाई. You won't go. बताइए क्यों नहीं चल रही? What if they take me back? Alone in a cell again. Their slave. इसकी बस एक गांड फटती रहती है. इसको वो लोग वापस ले जाएंगे. Varl and I will be at Gemini too. I'll protect you. हम प्रोटेक्ट करेंगे भाई तेरे को. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. डरने की जरूरत नहीं है तेरे को. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them. I told you from the beginning we'll never beat them. It's hopeless. Beta. Leave me alone! You don't understand! अबे भाई ऐसे मनाए इसको लोंडो. You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I looked through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? परेशान हो गई भाई, तो इमोशनल हो गई. करी में मेरे में क्या गलती रह गई? कमी क्या रह गई मेरे में? तू भी मेरे तरह बंद थी इतने सालों से, तूने भी बहुत कुछ झेला है, बट मैं बहादुर क्यों नहीं बन पाई? अलोय ने बोला ना उन दोनों सेम टू सेम है. कुछ तो सोल्यूशन निकालेगी है. अच्छा रोस्ट को दिखा रही है अलोय. रोस्ट था. ओए होए रोस्ट भाई लोंडो. You don't have a defect. तेरे बेटा तेरे में डिफेक्ट नहीं है कुछ. Beta, look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Rost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life. हाँ उसने अपनी जिंदगी दे दी हमारे लिए पूरी. He loved me in his own way. And that was enough. enough था हमारे लिए. हमसे प्यार करता था. तरीका अलग था उसका.
ने अपनी जिंदगी दे दी यार बंदे ने It was रोस्ट में. like having the strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. But it looks impossible. Look deeper. And then fight like you can win. इतनी अच्छी तरह समझा रही है लो इसको. ये फट्टू है भाई, ये बीटा ना. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. ये मैं चलूंगी. देखा मान You गई. said you'd try to protect me. I believe you. तेरी तूने बोला ना मेरे को प्रोटेक्ट करेगी तो मैं बिलीव करती हूँ तेरे पे. चलो भाई मान गई भाई, मान गई. But you have to promise me one thing. क्या प्रॉमिस करना है? Of course. बोल. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? समझ गए. नहीं बनने देंगे. नौकर. Promise. I promise. प्रॉमिस करते हैं. नहीं बोल. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. इसकी फटती रहती है बार-बार कि ये नौकर बन जाएगी उनकी दोबारा से. बट हम नहीं बनने देंगे, प्रॉमिस करते हैं. I'll be ready when you are. I swear. चलो भाई मान के लौंडो ये भी. 2.5 घंटे की रह गई है गेम. अब 2.5 घंटे की गेम में बहुत कुछ होने वाला है भाई. Whenever you are ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. ओके गाय कह रही कब रेडी हुई है. अलोय तू मेरे को पता आके बात कर मेरे से, फिर मैं दूसरों को बोलूँ रेडी होने के लिए. इससे बात करते हैं अब. Sounds like a ration every soldier should have. Aloy, are you well? Had a bit of an issue with Beta. It's better now, though. Ah, I'm not surprised. Really? Why not? I once knew a warrior who discovered he had a brother late in life. It was deeply uncomfortable for him. Did he ever get over it? In time. But not before the two siblings nearly killed each other in a single combat challenge. Ah. Well, at least I avoided that. I bet people are curious about that new arm of yours. None more than our Quen ally, I assure you. She couldn't wait to take it apart and figure out how it works. I gave her the data I used to build the thing, hoping that would satisfy her curiosity instead. Good luck with that. You nervous about the mission ahead? If I live, it will be in victory. If I die, it will be in battle. What matters most is that you achieve your objective. I'll do my best. Think you're ready to put all your training to the test? I am Tenakth. I am always ready. I should go get ready. I await your orders. ये हमारे ऑर्डर्स का वेट करेगा. अरे हाँ एल्वा को लाए थे ना, इधर उससे भी बातचीत करनी है भाई. Gaia, what's this room? This would have been an access point for advanced training. हमने रूम पूछा कौन सा रूम, से बात कर लेते पहले. Aloy, everything okay with you and Beta? It sounded like you guys had a lively conversation. We just had a lot to talk about. Does this mean she's coming with us to Gemini? आ रही है It वो. does. I hope you're ready to rein in the most stubborn AI of all time. That's what all this was for, wasn't it? Hephaestus won't go down quietly. Hephaestus is just a program that's lost its way. We are fighting for our survival. I can always call upon the goddess if you're nervous. Funny. I hope firing off those pulse generators will be enough to distract the Zeniths. It'll work. It has to. Always optimistic, huh? Nah, just stubborn. It's a good quality to have when dealing with you. Yeah, right. Any last findings you want to share before leaving?
Not really. Though I've reached a decision. Oh? When we put Gaia together, I want to return to the Nora. Spread what I've learned. You think they'll listen to you? In time, I believe so. If anyone can make it happen, it's you, Varl. This mission isn't gonna be easy. Hope you haven't been slacking off on your training. And risk Zoe coming after me? I value my life. At least you found the Omega clearance. That should help. Wish that was the only thing I found. I knew finding Thebes would lead me to Ted Faro, but I never imagined he'd end up like he did. How bad was it? Bad. He destroyed the world and crawled into a hole after killing those who saved it. If you ask me, he deserved whatever he got. That he did. How does everyone seem to you? Anxious, but ready. I heard Catalo ask for Alva's help with his pulse generator. And I know he's been helping her with a few fighting techniques, just in case. I hope they aren't needed. Like I said, just in case. I'm glad you're coming with me, Varl. Sure there's no urge to run off alone in there somewhere? No more running. Hey, we'll be going after Hephaestus soon. You good with the plan? I've already got the location of my assigned cauldron. Good. I heard you and Beta had a talk. News travels fast. It wasn't exactly a quiet conversation. There were just things that needed to be said. A healthy crop to those who clear the weeds between them, as the Utaru say. The Zeniths did a number on Beta. But she seems to trust Varl. I still can't believe she told him the Zeniths are immortals. Old ones who cut themselves off from the cycle of life and decay. I've never heard of anything so selfish. To deny our dying bodies to the earth. To doom the life that would bloom in their place. It's despicable. Have you met our new Quen guest yet? I could barely keep up as she gave herself a tour of the base. Varl gave her a new focus. Though when he told her she was free to access all the data we have here, she turned so pale I thought she'd faint on the spot. We showed her to the archive room so she could see for herself. She hasn't left the place since. That sounds like Alva. You look like you have something on your mind. We're going to war soon. And war is something I promised myself I'd left behind in the Red Raids. But the more of your data I go through, every voice I hear, every word I read from our ancient past, it makes me realize just how much life was given so that ours could flourish. Fighting for that gift, it's our responsibility. If we fail, it was all for naught. Helps to know you're not alone. For a moment there, you sounded like Varl. I don't know what you're talking about. I should go. As soon as you intend to leave for Gemini, you'll hear about it. इससे बात करते हैं. Hey, I thought I'd check in before leaving for Gemini. Are you sure we shouldn't be checking up on you? Whatever went on between you and Beta sounded intense. अबे सब में खबर फैल Not that गई. I'm judging. पीटर से हम बात कर रहे थे. Forge knows all the screws flew loose every time Mercer and I fought. I think we'll be fine from now on. I'm glad to hear it. Have you spoken with Alva yet? Yeah, when she's not reading the archives like a giddy kid drinking her first ale. She took to that new focus quick, that's for sure. I gotta say, I'm a little jealous. But I can see why you two hit it off. Anybody take you up on that ale you brought yet? Zoe can't stand the smell of it. I tried Alva, but I don't think she knows what taking a break means. And I'm not putting Varl anywhere near that stuff after that victory party in Meridian. What about Catalo? Ah, now there's a man that can hold his liquor. Pretty sure we downed half a keg. We had a good chat, I think.
You look tired. Ha! You never want to hold back, are you? I've just been making sure that I got everything down for this mission of yours. I wouldn't want to be the usual screw-up out there. You'll do fine, Erend. After we get Hephaestus, we'll be taking the fight to the Zeniths. So, no more reading. It wasn't that bad. Not really. Besides, going through all that data helped me realize something. You know, the soldiers, the ones that fought the Pharaoh machines so Gaia could be built, they were fighting a battle that couldn't be won. Not with all the weapons in the world. I think most of them realized that, whether anyone said it or not. They still did it, though. They bought time for all the eggheads working to save the future. Our future. As long as I can do that for you, I'll consider myself a success. Thank you, Erend. I'm glad you're with me. Yeah, okay, enough. I'm gonna get emotional. Bet you're used to that focus by now. Well, I can hit machines in their weak points. I guess that's something. I wish all the other data was as easy to deal with. Now, to be honest, it's hard to understand half of what's on there. And then the other half reminds me, well, this isn't a fight you can win by just waving a hammer. Which is kind of what I do. But hey, that just means I gotta study harder. Now, make myself useful. Just give it time. You've been looking at any interesting data? Yeah, I asked Gaia to find me something to look at a while back. And she found the mother of all forges. They called it sports. Turns out the old ones spent a lot of time tackling and punching each other for points in one game or another. Are you mixing some solid food and fresh ale? I bet half the claim will be lining up to watch. What else have you been studying with your focus? Yeah, I've been looking into this Vegas place you found. Gaia showed us everything that happened when you went to get that Poseidon thing. I mean, this Morland guy seems pretty smart. Though, risking the Tanakh clan lands for a light show is a bold move. Maybe I should check up on them at some point. Just in case. Right. I should go. That same here. I got a date with a cauldron to prepare for. तो जब इसने जू से बात करी ना, जू बोली ना कि अरे तेरे और बीटा के बीच में बात हुई है, तो एलोय ने नीचे मुंह करके बोला हाँ न्यूज़ तो बड़ी जल्दी ट्रैवल करती है। चल अब गाया से जाके बात करते हैं, बेचारी बोल रही थी। Aloy. Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, me and Beta. I guess you heard what happened. तेरे को पता ही चला गया होगा। I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation, if you like. क्या चूज करें? और प्रोग्रेस नहीं ये करता हूँ। Okay, people. It's time to head out. I'll get everyone together. चलो भाई आ जाओ सब, रेडी हो जाओ लोंडो, रेडी हो जाओ भाई सब। ये चल पड़े भाई सब। ये भाई साहब क्या सीन है लोंडो, ये सीन देखने के लिए तरस रहा था मैं कब से। अब हो गई भाई स्टार्टिंग, ओ सॉरी एंडिंग स्टार्ट हो गई है भाई अब गेम की। ये क्या गाना बज रहा है।
Connections in place. Booting up. Beta, Aloy. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position, and mine is too. Mine as well. Okay. Radio silence until I give the all clear. Signing off. Gaia, let's cage the beast. Connecting to the Cauldron network now. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Clearance confirmed. Initiating containment sequence. अरे भाई शेट मुझे पता था ये दिक्कत करेगा. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. 13F. Wait. Shit. It's cracked. Look. ओ भाई. का डिफेंस एक्टिवेट कर दिया इसने. That means machines are. रास्ते में. Get ready. Here they come. चलो भाई हमें रेडी होगा. रेडी होना होगा लंडो में. Be careful. पता था एलोय ने पहले ही बोल दिया था मशीन आने वाली होगी. निपटते भाई इनसे. भाई उसने तो पता था मुझे इसको पकड़ना मुश्किल होगा. अरे तेरी यार हेल्थ चार्ज करने के लिए कितना यूज करना पड़ेगा मेरे को. बे यार हेल्थ ही रिकवर करता रह जाऊंगा क्या. 2 घंटे की रह गई है बस अब. सुनता ही रहूं तुझको ही मैं, देखता ही रहूं तुझको ही मैं. और कैसे ऐसी सिचुएशन में मेरे को गाने सूझ रहे हैं. तो ये तो मैं तेरी मीठी मीठी बातों में ऐसा खो गया. इश्क में पागलपन है, इश्क में नाराजी, इश्क बर्बादी है, इश्क आबादी. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core. ढंग से खेल ले कुणाल, फोकस करके बकचोदी मत कर. 814 वॉचिंग आ रही है आज. Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there is a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. मेरी बोतल में पानी भी खत्म हो गया लोंडो. बताओ जरा. और मैं बीच में उठता हूँ न्यूज़ स्ट्रीम के. ये बड़ी दिक्कत है. गर्मी में बैठा हूँ पसीने पसीने, ऊपर से पानी भी खत्म हो गया बोतल में. देख रहे हो मेरा नसीब लोंडो. नसीब नसीब से. प्रोडक्शन चैम्बर लग रहा है एक तरह का. I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal carriers will lead me to where it's getting materials from. वो कह रही है वो कह रही है कैसी मशीनें बनाने की कोशिश कर रहा है चैम्बर में. अलोय कह रही मुझे नहीं पता बट इसे बंद करना पड़ेगा. वही तो लोंडो. Looks like there are a couple of ways I could go. एफएसएटस
छुपा पड़ा हुआ है भाई, उसे भी ढूंढना है। Managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. What if you bypass the processor, connect it to the power node? I think that could work. I think it could. ये लटक के जा रहे हैं हम। एक गाना है ना, थोड़ा भाई भी गानों की बातें मत कर। Near the central platform. Thanks. I should deal with these machines first. साले It's down. गया। गाना है ना वो कि नसीब से मिला है तू, नसीब से मिला जो कि तेरा साथ है। मेरे को तो भाई नसीब से बेंचो तरक्की नहीं मिल रही है, बेंचो किसी का साथ का मिलेगा। बिजली नहीं मिल रही भाई नसीब से, मेरे को वाईफाई नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, बेंचो किसी का साथ मिल जाए वही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। Yeah. Oh, great. The machine's on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. बीटा हेल्प कर रही है हमारी काफी। यस, ये तो लेके आए भाई। L भाई इन्वर्टर चलता रहा है भाई बस। जब तो मैं वाईफाई के लिए बोल रहा था, वाईफाई बंद हो गया था थोड़ी देर में, बट इन्वर्टर औकात ना दिखा है भाई। इन्वर्टर वैसे ही पूरा दिन चलता रहता है, लाइट नहीं रहती यहाँ पे पूरा दिन। पेंचो रात को तो और बहाना मिल गया तूफान का लाइट को जाने का, बस इन्वर्टर चलता रहा है भाई। लोंडो ये स्ट्रीम हम ख़त्म कर लें, ये गेम कंप्लीट कर लें हम, एटलीस्ट 2 घंटे और चल जाए बस इन्वर्टर भाई। मैं तो गर्मी में बैठा ही हूँ, मेरी फैमिली भी गर्मी में सो रही है। I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Hephaestus' control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks. It sounds like it fled to another chamber. Well, I'd better not get comfortable. Energy containment failed. Saves overloading. Great. Let's just cover the floor with lightning. I gotta find a way over it. अरे आ गई भाई, आ गई लाइट, आ गई भाई। बट वापस जाए ना भाई, ये लाइट कैसी है, 2 मिनट के लिए आती है, 2 मिनट के लिए चले जाती है वापस। फिर औकात ना दिखाए लाइट बस सब यार। Anyway, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right. Or some luminous braiding. You could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think... बट वाईफाई तो अभी नहीं आया होगा यार, और आया भी होगा तो मेरे को पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वाईफाई मैंने बंद कर रखा वहाँ से। फ़ोन उठेगा, वाईफाई ऑन करेगा, और नहीं आया होगा तो फिर बेंच और दौड़े लग जाएंगे फिर।
अबे नेट पे ही रहने देता हूँ तो थोड़ा वाईफाई को बंद ही रहने दे। नेट पे से वाईफाई पे स्विच करूँगा और वाईफाई चले ना मैं तो फिर नेट पे स्विच करना पड़ेगा, फिर गोला घूमेगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इससे अच्छा अब नेट पे ही चलने दो स्ट्रीम को। ये एल अबे तेरी, चल यार थोड़ा तो पसीना सूखा। लाइट आई भाई, ये छोटे पंखे की हवा कितनी तेज लग रही है मेरे को। लाइट आई है तो कहते हैं ना प्यास से कोई बूंद भी मिल जाए तो उसे सागर लगता है। भाई आज बात सच हो गई लोग, ऐसी गहरी गहरी बातें कह जाता हूँ मैं तो मैं भाई आज मैंने एक्सपीरियंस करा है भाई। वैसे पंखे की हवा मेरे को इतनी कम लगती है, बट भाई अभी लाइट आई है तो कितनी तेज लग रही है इस पंखे की हवा मेरे को। मेरे को बस लाइट का डर था कि आ जाए तेरे न लगा दे और आ गई। फिर मैटर बंद हो जाता तो भाई लोड़े लगता, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। अभी चल नेट से तो कर पा रहा हूँ मैं स्ट्रीम, वाईफाई बंद है तो वाईफाई चल नहीं रहा है तो लाइट कहाँ से लाता मैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाता। बीजीपी वालों के पिछवाड़े से थोड़ी लाता मैं। अरे तेरी ना साले पूरा दिन लाइट देते हैं और रात को वेंचो तूफान आ गए तो बहाना मिल गया। अच्छा बीएमजी भाई लाइट आ गई। हाँ भाई लाइट से मेरी ज़्यादा फट रही थी भाई। आज वेंचो 815 वॉचिंग आ रही है, 800 नहीं 815 वॉचिंग आ रही है वेंचो लाइट नोटन की दिखा रही है। ये तो देखो जो 800 लोग हैं कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं भाई टिक के। हाँ कभी कभी 812 हो रही है, कभी 809 हो रही है, कभी 802 भी हो रही है, बट 814 से 800 से कम नहीं हो रही। अच्छी बात लग रही है, रिकवर हो रही है बार बार। अरे बहन चो साला कंगारू से है भाई, ये तो अजीब सा ही कुछ। मुझे पता था हेपेटाइटिस को वेंचो कैप्चर करना आसान काम नहीं होगा लोडो, इसलिए तो इतने सारे आए हम। मर लेना बत्तेरी का, तेरी सास की दुम। सास की दुम का मतलब क्या होता है? चल ले आज मैंने स्ट्रीमिंग करी ना ऐसे पसीने में बैठ के, मेरे को पुराने दिन याद आ गए। अलमारी में घुस घुस के पसीने में मैं जो वीडियो की रिकॉर्डिंग करता था, मैं वॉइस ओवर करता था, डबिंग करता था। भाई कम मेहनत नहीं करी है भाई डबिंग वाली वीडियोस बनाने में मैंने, फिर भी बेंचो व्यूज़ नहीं आए ना इतने सालों तक। बहुत गुस्सा आया मेरे को, जब भी तो मैंने यूट्यूब क्विट करा था भाई। जब भी तो मैं वीडियो नहीं बनाता, एक वीडियो बनाई तो है वो, उसमें बेंचो 14 व्यूज़ आए अभी तक बस। Okay. Festus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. The shit Festus was building. They must have finished it. और वर्मा भाई बोल रहे थे पीएनजी भाई फिर से डबिंग वाली वीडियोस बनाओ ना, एटलीस्ट GTA वाई सिटी तो कंप्लीट कर लो डबिंग से। बेचारी आधी तुरी छोड़ रखे अपने। अरे कहाँ से भाई, नहीं गर्मी हो रही है महंचो, 2 मिनट भी अगर बिना पंखे बैठ जाओ महंचो पसीने आते रहते, पंखे में पसीने आते रहते हैं भाई मेरे को। ये पंखे की आवाज़ बहुत कम पड़ती है भाई मेरे को, मैंने बहुत दूर रख रखा है लोडो पंखा ताकि मेरी आवाज़ तुम लोग को सही सुनाई दे। मैं महंचो पसीने में हो जाऊँ कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ सही आनी चाहिए तुम लोगों को। कौन बनाएगा भाई दोबारा वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस डबिंग वाली महंचो कुतियों की तरह, व्यूज़ आने नहीं है। अलमारी में कैसे करते थे बीएमजी भाई? अरे अलमारी के दोनों दरवाजे घुसा के, और घुसा के कह रहा हूँ तो अलमारी के दोनों दरवाजे खोल के उसके अंदर घुस जाता था मैं। मतलब बैठता नहीं था, मतलब खड़ा रहता था पूरा दिन, पूरा दिन खड़ा रहता था मैं चूते की तरह। मुझे रिकॉर्डिंग करता रहता था मुँह घुसेड़ के कपड़ों के बीच में, इससे आवाज़ गूंजे ना और नॉइज़ ना आए। जब तो लोग कहते थे नहीं क्लियर आवाज़ कैसी आती है तेरी। बाकी फ़ोन का भी माइक अच्छा है मेरा।
अरे तेरी का भाई बहुत हालत बुरी हो जाती थी। एक तो खड़ा रहना पड़ता था, ऊपर से अलमारी में कपड़ों के बीच में मुंह घुसा के रिकॉर्डिंग करो। बहन चो पसीने में हालत बुरी हो जाती थी मेरी। आंखों पे पसीना, मुंह पे पसीना, बहन चो पता नहीं कहाँ का पसीना। पूरा दिन खड़े रहो बहन चो, एक 4 मिनट की वीडियो बनाने के लिए बहन चो। ले भैया स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ अपना, जो गेम्स पेंडिंग पड़ी है पड़े रहने दो। बीच सीरीज 2 पेंडिंग पड़े रहने दो भाई। उन पे व्यूज़ आते हैं मेरे को पता है, GTA 5 की वीडियोस पे, हिंदी डबिंग वाली पे, बट मेरे को व्यूज़ का चार्ट डालना है। चल अरे तेरी चल होने लगा ऐसा नशा, ऐसा पहले कभी न हुआ, ये जो हुआ इसकी तू ही तो वजह, देखा करूँ सुबह ही मैं। There should be one more note to override. Good. Stand by. Sending the messages back to you. खड़ी रहो इन पे बेटा, हम भेज रहे हैं हैपेटिस को तेरे पास वापिस। यस ओवरराइड करना है ना मैं, रुक जा। यस दे दिया भाई। No more hiding, Hephaestus. अब नहीं छुपने वाला तू। हैपेटिस जो भी नाम है बेंचो। अरे यस बेटा कह रही है वापस आ गया वो हैपेटिस I'm heading back. और में मारे वापस, रुक जा। अरे फिर स्टार्ट करेंगे, मर जाओ ना। I'm glad you came along. खुश है बेटा तू साथ में आई हमारे, Couldn't have done any of this. और बाल भी साथ में आया। Right back at you, Aloy. बेटा की वजह से हो पाया सच्ची लोंडो। अब ये लोग मर्ज करेंगे, अब इनका काम रहेगा इन दोनों लोंडियों का, साथ में मिलके करेंगी, क्योंकि दोनों एलिजाबेथ की कॉपी है। तुम लोगों को पता ही है बात, जब ये मिली थी तुम लोगों को मैंने जब भी बता दिया था। Aloy, the bypass is done. बाईपास डन हो गया और स्टेबल हो Hephaestus is गया, 100% contained. 100% कंटेन हो गया I better get हैपेटिस। started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the link, please. डन। यस वे लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी गेम है लोंडो, नाइस। Okay, to complete the merge, we need to excise Hephaestus's malicious code. Carefully. क्या गाना बज रहा है, दोनों मिलके कर रही हैं। कर लेंगी भाई, कर लेंगी। अरे वाह भाई, वो हमें करना है ऐसे। हो गए दोनों। अबे अब क्या हो गया, वो लोग तो नहीं आ गए जीनत के बंदे, लग रहा है लोंडो वही आए होंगे, वही है मुसीबत, वही लोग आ गए। इन्हीं का डर था, और बेटा की इन्हीं से फट रही थी कि ये लोग उसे वापस से नौकर बना लेंगे अपना। ले भाई, ओ भाई शिट, एलोय शिट। ओ भाई एलोय ने प्रॉमिस करा था मैं तेरे को बचाऊंगी, बेंचो एलोय तो खुद देर हो गई। शिट, कह रहे बेटे को लेके आओ। ओ भाई वाल को भी निपटा देंगे भाई लोग। शिट 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 शिट, ओके से कुछ दिख गया। सही करा सही करा सही करा सही करा, पैन चट पैन के पकोड़ो।
पाल भाई ने कमाल कर दिया। अरे बहन चो घंटा फर्क नहीं पड़ा उन्हें। Get behind me. ले भाई बाल भाई लड़ेंगे, क्या कर लेंगे बेचारे फिर भी। और ले Come on, quit screwing around. भाई बेटा तो गई यार, फिर से नौकर बना लेंगे लोग से। Now we're having fun, right? गंदे है भाई ये लोग, साला ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है इनको तो। ओ भाई वाल को तो मार दिया भाई। शिट, ओ शिट लोंडो, वाल को गवा दिया हमने। शिट भाई मारा गया भाई। ओ बेटा को ले जा रहे हैं। अलोय ने प्रॉमिस करा था यार, क्या से बचाएंगे लोंडो। शिट नहीं, अलोय कर कुछ, चला तीर। क्या हो गया इसको, वो चला क्यों नहीं पा रही। Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. भाई क्या हो गया अलोय को, चला क्यों नहीं पा रही है। मैं फेल हो गई। All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? ये कौन आ गई, ये क्या कर रही है। ये आंटी कौन थी, इसने क्या करा भाई। वो ये कहाँ पहुंच गए हम। अबे हमने प्रॉमिस करा था भाई बेटा को बचाएंगे हम। शिट, उठते बेटा का नाम ले रही है। ए भाई वाल को हमने खो दिया, बेंचो बेटा किडनैप हो गई फिर से। लोग नौकर बना लेंगे, वाल के लिए रो रही है ये। शिट लोंडो यार, हम फेल हो गए यार। वो तो इस चीज में तो सक्सेसफुल हो गए बट इसमें फेल हो गए। शिट, और गाया का क्या हुआ होगा। ये कहाँ आ गए भाई, हमें भी पकड़ के लिए आए क्या ये लोग। यानी हम कौन से कमरे में है, ये कौन से कमरे में है भाई हम। हेलो वही कह रही है कहाँ पर हूँ मैं। You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? कहाँ पर है बेटा। Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've टिल्ला आंटी हमारी मदद कर रही है shaken out the भाई। cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast. Okay. ये चीजें कितनी रियल लगती है भाई एलोय की। ये रेडी हो गई फिर से। अरे वो कहाँ गया, डंडा मारा ओवरराइट वाला। रख लिया क्या, हाँ रख लिया रख लिया। ये कौन गा रहा है भाई गाना। Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off world. Take a look. बारी बारी सी चीजें क्या चल रही है आसपास, आवाज आ रही है ना उन लोग कुछ बारी बारी चीजें चलने की। इसके फेवरेट गाने हैं। Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art. Done so soon? I've got more important things to worry about. बिल्डा आंटी का भी कलेक्शन अलग ही है। चलो भाई कोई तो मिला मैं मदद करने वाला। परसेंट ले हो गया फिर से। बाहर रोशनी नजर आ रही है इसका बाहर निकलने का, बट है कहाँ पर हम लोग। ये खड़ी। There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? ब्रेकफास्ट करें आंटी, ऐसी सिचुएशन चल रही है, हम ब्रेकफास्ट करें आपके साथ बैठे। यार वाल की बंदी को क्या जवाब देंगे हम, बेंचो मारा गया तो खा जाएगी हमें जू। वाह क्या तैयारी कर रखी है। ये घर है तेरा? The one you recreated for Beta in the data channel you shared.
How perceptive of you. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down? Have a जो chat भी with तेरे you? लोगों ने करा है और हम तेरे साथ They're बैठ के not चाय my- पिए ब्रेकफास्ट करें They never were. कह रही वो मेरे बंदे नहीं Especially है not now. और अब तो बिल्कुल भी नहीं है You shot off into space with them and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. ओल्ड You फोकस repaired it? मैंने रिपेयर कर दिया But that means you've seen. Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. ओए छोटी एलोय 1,000 years at my back and I haven't even come close. रोस्ट I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Especially so. Please, sit down. There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus.
The ones working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. ये करते हैं चूज. First Faro. Now Hikaru and the Tanakh. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. ये बात तो सही कह रही है वैसा. If it looks impossible, look deeper. कई बार नई दुनिया बनाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. उत्तरी. उन्होंने कह दिया तू हेल्प करना चाहती है ना तो खोल मैं. बात करना चाहती हूँ बीटा से. कह रही है ना डिटेक्ट कर लेंगे वो लोग, ट्रैक कर लेंगे. अलोय कह रही है बेंच खोल. रिस्क है तो रिस्क है. बेंच पहाड़ में जा बेंच. बात करना चाहती हूँ मैं बीटा से. डेटा चैनल के बारे में. भाई साहब अलोय तो भाई साहब. वे बैठी भाई बांध रखा है इसको कैसे कैसे पता नहीं कैसे पाएंगे बात भाई वो लोग ट्रैक कर लेंगे मैं शिट. What are they doing to her? क्या कर रहे हैं वो लोग Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. तो भाई Beta, can you hear me? हो सकती है बेटा तू हमें. You're alive. कह रही तू जिंदा है. They're watching me. I can't hold up this extra protection for long. Okay. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. सीक्रेट बात कर रही है अलोय कुछ इससे. ये आंटी आके सुन रही है. क्या बात कर रही है वो? Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me.
इसकी तो हालत बुरी है। लिया लो ने बहुत इससे। All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. देखा मुझे पता था Take पूछेगी। Simon's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? फिर तो साइलेंस से पूछेगी कि वो तेरे को अपना हथियार दे। Will be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tenakt. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. तो लोग हमारी बात हो गई आंटी से। Are you there? Aloy. एरेंट है। Aloy, is that really you? कह रहा सच में तू है। उसे विश्वास नहीं हो रहा मैं जिंदा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा। We're back at base. What happened? अरे क्या हुआ था? बैक पे बेस में वापस आ गए हम। Easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. हाँ, बाद में एक्सप्लेन करेंगे तेरे को। We'll wait here for you. बाद में ज्वाइन करते हैं। Voice, Aloy. अरे ठीक है, बाद में बताइए To let आपको। you know, I'm now patched into your चलो मैं focus तेरा वेट network. करूँगा। Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. तो I नहीं sent you नहीं data पता on the हमारे Horus बेस के बारे energy में। cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. चलो जाते हैं अंदर। हम प्लानिंग कर रहे थे ना उससे बीटा से, तो आंटी यहाँ आके हमसे पूछा, मुझे पता था आंटी पूछेगी हमसे आके कि बेंचो क्या प्लानिंग कर रहे थे तुम लोग। तो उसने बताया लोए ने कि साइलेंस को पढ़ेंगे, उसके पास ऐसा हथियार है जो कि तुम लोग की शील्ड तोड़ सकता है। ज़ैनिथ लोगों की। You have to strike back. Draw blood. Hey, can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. सही बात है, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। हमें फाइट करनी पड़ेगी। All right, so what are we gonna इनके do, पास huh? दोनों हैं, गाया भी Take और on बीटा all भी। of Regala's इन लोगों rebels? के पास। Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. अवेल है। इतना करा नहीं उतना तो खो दिया लोगों ने। So. अब ये बताएगी कि वाल तो मर गया, ऐसे पता चलेगा? After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith, Eric... The Zeniths were tracking Hephaestus. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? कौन सा वो ज़ीनत जो कि तेरा साथ दे रहा? At least we didn't lose you too. So what do we do now? अब क्या करें? We're going to defeat the Zeniths and get Beta and Gaia back. But first, we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed.
Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Ikaro. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. It won't be long before we take the fight to the Zenith. You'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded important. वर्मा भाई क्या कह रहे हैं, गाया और बेटा दोनों को खो दिया हमने उल्टा। वही तो, जितना हमने पाया नहीं उतना तो खो दिया यार। खुश हो गए थे यार, हेपेटिस को कर रहे हैं मर्ज, दोनों मिलके अब हो जाएगा। अब उनको वापस लाने के लिए लड़ना पड़ेगा। वही तो वर्मा भाई, क्या बाकी वो आंटी जीनत होकर हमारा साथ दे रही है, इसका मतलब घर का बेदी लंका ढाए। वही तो, और पता नहीं भाई, मैं भरोसा नहीं कर रहा वो आंटी पे इतनी जल्दी यार। एलोय भी भरोसा नहीं कर रही वो आंटी पे। इसलिए तो कुछ प्लान बना रही थी बीटा के साथ एलोय। एलोय ने बताया नहीं आंटी को फिर भी इतना कुछ, आप उसने बता दिया बाद में, वो अलग बात है। बट एलोय भी जल्दी विश्वास नहीं कर रही आंटी पे। ये पता नहीं है तो जीनत ही ना वो आंटी, कब बदल जाए, धोखा दे दे हमें। वो क्या वाल की वो है क्या? We would come out here to tend to the garden. यार गार्डन में आया करते थे, अच्छा इसलिए बैठी है। मुझे लगा वो बना रखी इसने मिट्टी उसकी। Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plainsong and further east to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Bala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Bala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. बेचारी यादें याद कर रही है अपने बंदे के साथ। बेचारे दोनों ने किसी करी थी, इतने में वो सिमट गया लोडो। इसे हमें क्या पता इन दोनों ने क्या क्या करो, अलग बात है। गाना गा रही है तो एलोय भी गाने की कोशिश कर रही है। एलोय का फेस थोड़ा आंटी वाला नहीं है, कभी कभी लगता है मेरे को ऐसा। कोई बड़ी उम्र वाली ने एक्टिंग करी है। Follows new life. So it is with the land. And so it is with us. I'm with child. हैं? बच्चा है इसके पेट में। I was going to tell him when he got back from Gemini. देखा, मैं कह रहा था ना तुम लोगों को, क्या मैं तो किस दिखाई दी, बाकी लोगों ने बहुत कुछ कर रखा हो, वो अलग बात है। कह रही मैं बच्चे को यहाँ पे लाऊंगी और उसके साथ बैठा करूंगी और सनराइज देखा करूंगी। I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew.
I promise to look after them. I'll try to visit again when I can. But for now, I need to go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. I know I'll use it on the Sunray and get ready for an entrance Regala will never forget. Hey, Aaron. Yeah? I was thinking you could spar for a little. Where'd Katalo go? Override installed. Now to find a sunwing. I think there are some roosting at the top of the mountain. Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. यहाँ कितना सैड सीन चल रहा है, बेचारा पापा बना तो टपक गया वाल। हाँ वो बात तो है। अब वो बच्चा किसको क्या अब वो बच्चा किसको पापा बोलेगा? अच्छा अब वो बच्चा किसको पापा बोलेगा वाल का? बीएनजी भाई को बोलेगा वो पापा। Good. There are sunwings up here. I'll have to approach them quietly. बेंचा वर्मा भाई तुम चूतिया उड़ते हो क्या? बेंचा आधी रात को इतनी तेज हंसा देते हैं मेरे को। कुछ भी मतलब कुछ भी। Probably a fast flyer too. Got it. अरे इसकी सवारी करी क्या लो तू? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। बेंचा वो बेचारी बोल रही है वो बच्चा किसको, अब वो बच्चा पापा किसको बोलेगा? वर्मा भाई बोल रहे बीएमजी भाई को बोलेगा। अब वो बच्चा बीएमजी भाई को पापा बोलेगा। Whoa! Head rush. Tilda, I'm in the air. Then you'll want to pick up an energy cell on one of the ancient Horus Titans. But first you must send out a pulse to activate them. I've sent you the necessary software. To deploy it, you'll have to override one of the communication machines you refer to as Tolnecs. There's one in the middle of the desert. अरे वर्मा भाई तुम भाई हमारी बात ही नहीं डाली है भाई। There's a Tolnec. Need to get on top of its head. Now, how to land this thing. अबे भाई साहब। Made it. Just got over. पलक क्या बोल रही है? वर्मा तुम्हें ऐसी सिचुएशन में बकचोदी सूझ रही है? आलिया बोल रही है अरे वर्मा सट्टा हुआ यार कुछ भी। वही तो। Okay, Tilda. I've overridden the Tolnec. भाई। Good. And the energy cells are now primed. Simply pick one up on Horus. The nearest one should be northwest of your position. Dropping it on Regala's machine should produce quite a spectacle. Thanks for the assist. I told you, I want to help. भाई चमगादड़ में भाई चमगादड़ में उड़ना रह गया था इस गेम में लोंडो। अब वो भी उड़ लिए हम। ये गेम जब तक खत्म होएगी ना हम बहुत कुछ कर लेंगे भाई।
सच में भाई। I bet that's the Desert Clan's capital. I can really see the scale of it. The Horus should be northwest of here. Gone as rebels. Now the Horus meets Moby. Heading for the Grove. हम मस्त मस्त जगह से उड़ते हुए जा रहे हैं हम दोनों। ओ भाई ओ भाई। There's the energy cell. Right on the Titan's back. अंज भाई का कुछ रिप्लाई नहीं आया, बोले नहीं अभी तक कुछ बोलेंगे तो खतरनाक ही बोलेंगे। सोच रहे होंगे कि क्या बोलूं, ऐसा क्या खतरनाक बोलूं मैं। तो नहीं गए कहीं सीम देखते ऐसे सोना तो नहीं चाहिए, क्योंकि रोब्लॉक्स भाई के साथ ही खेलनी है। मैं भाई वैसे तो अभी गेम पे फोकस कर रहे थे, सोए तो नहीं होंगे। देखा करूं तुझको ही मैं, सुना करूं तुझको ही मैं, हाँ कैसे हो गया ओ मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। अरे भाई ये लोग लड़ने में लग रहे हैं, इनका अलग ही सीन चल रहा है भाई। तो अलोय ने प्लान बनाया है कि साइलेंस की जो आर्मी है ना उसको दूर भगाएंगे और साइलेंस का हथियार छीनेंगे, जिससे जीनत लोगों की शील्ड को हम तोड़ पाएँ, क्योंकि साइलेंस ही है जिसके पास ऐसा हथियार है जिससे हम जीनत लोगों को मार सकते हैं। हम हिल बेंच आपस में लड़ने में लग रहे हैं यार, इनकी अलग जंग चल रही है। यस ये भाई साहब मरो आंटी क्या हुआ? मर गए भाई, मर गए, मशीनें मर गई। अच्छा ये लोग देख रही है ये किसने करा, को ये नहीं पता। एलोय आ गई, एलोय भी आ गई भाई। एलोय It's Aloy. कह रही है एलोय। She flies on the wings of the 10. The tide has turned. Push through. आंटी में हिम्मत आ गई बहन जो, मारो बहन जो। एलोय आ गई, अब तो हिम्मत आ गई भाई लोगों में। वो भाग रही है, तो रोकते हैं भाई, रुक जा, भाग गई अंदर। हम भी ले जाते अपना चमगादड़ उधर। ओ भाई सब क्या सीन है जो भाई यहाँ से गेम को मिस कर रहे हैं ना भाई, वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं भाई सीरियसली। तो और ज़्यादा सुंदरता दिख रही है भाई गेम की। वो शिट कोने पे आ गए लोग, क्या करेंगे? मुझे लग रहा है एलोय बचाने आ जाएगी। इन लोगों को एलोय बचाने आ जाएगी लग रहा है। ये लोग गिर जाएंगे एकदम से, नीचे से आ जाएगी वो लग रहा है। नहीं ऊपर से आ रही है भाई। ला ले पहले एलोय तू, है ना? मैं आ गई हूँ। वाह भाई वाह, ओए सीन है भाई। Enough bloodshed. Let's settle this. You and me. Easy to say when you're on top of a machine. कह रही बहुत हो गया, बहुत खून बहा दिया, अब तू और मैं बस। हिम्मत वाली है भाई वो। Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Fine. I accept your challenge. And once I'm done with you, I'll get to finish the slaughter. We'll see about that. The duel is set. Let none interfere. चलो भाई इससे फाइट करनी होगी।
अरे तेरी का भाई साहब, ओ भाई साहब, कोई बात नहीं बढ़ते हो भाई। ग्राफिक्स और ज्यादा सुंदर होते नहीं जा रहे यार, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है, हर गेम में बेंचो गेम एंड होते होते ग्राफिक्स और ज्यादा सुंदर होने लगते हैं। तो जगह ऐसी है भाई, जो उसमें ब्लर इफेक्ट आता है ना, बड़ा मस्त लगता है भाई ये। और कितनी मस्त लग रही है भाई गेम, और भी ज्यादा यार। जगह भी तो भाई सुंदर है भाई। अलोय मुंह बनाती है भाई, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं ना इससे, ये कुछ भी करती है तो। तेरी का चल आंटी बाद ना आई बस तेरी का। Glad I had this. ले क्या करेगी? और भाई साहब, ओ भाई साहब, और भाई साहब, और मोरी मैया, ओए तेरी का जमीन ही तोड़ दी भाई। आंटी तो खतरनाक लगी भाई, आंटी की माँ की चूड़ियाँ 4 बार भाई। ओ भाई समय तो हल्के में ले रहा था, तो कह रही यही एंड है। अच्छा it is. ये एलोय कह रही हाँ यही एंड है। भाई साहब आवाज देख, क्या बारी आवाज में बोली है एलोय। ये भाई, ये भाई Here I am again, on my knees before bootlets and cowards. Go ahead, run me through. Shut your mouth, traitor. सही बात है गद्दार। It was you who flew in on the wings of the 10. You who challenged her by our rights. You must decide her fate. I spared her once. It only made things worse. अंकल कह रहे हैं तू डिसाइड करेगी Was the best of my इसके साथ क्या करा जाए, छोड़ दिया जाए, What a waste. या मार दिया जाए। ओ She's तेरे dangerous, all साथ right. हाँ डेंजरस है ये, But maybe that's exactly what I need. ये वही है जिसकी हमें नीड है। What more do you have to conspire about? Whether you live or die. जीना चाहिए मरेगी, क्या चूज करूं मैं? ये करता हूं। I'm not here to forgive you for your crimes. But there's another battle ahead. Against an enemy more powerful than anything you can imagine. And I need people. A squad. That's willing to do whatever it takes. I don't want your mercy. It's not mercy. The battle I'm talking about will be charging into a nightmare. A better death than this? Yes.
My blood is yours. Your enemies are mine. Auntie. Meet us at our stronghold, in the mountains near Plainsong. You mean to send her alone? Without even an armed guard? She does not need it. I will be there. You have my word. I'll hold you to it. आंटी को जरूरत नहीं है गार्ड वार्ड की भाई। ये संभाल लेगी। There's something you both need to see. In the throne room. डांस भाई कह रहे नहीं गया भाई। भाई तो खो रखे थे गेम में लग He रहा है। surrendered to our guards outside the grove. Claims he has an urgent message for the Outlander who defeated Regala. So, state it. It's for her alone. क्या निकाल रहा है पीछे से? From an interested party. Yeah. I'm gonna need some privacy. Clear the room. Put him with the rest of Regala's soldiers. I'll see you back at base. ठीक है भाई। ये मैंने भी छाती पे ठोक दी। ये अल्लाह भाई तो ये अल्लाह। You saved the tribe. Let me help you with your mission. No. With Regala gone, you have a chance to build the future you dreamed of. So get to your task. Then at least allow me to give you this. Armor for the battle ahead. May it keep you safe. Thank you. Do you have any idea what you've just done? Oh, it's a pleasure to see you too, Silence. Congratulations on your victory. You saved the Tanakh for a few weeks. Unfortunately, you've doomed the entire planet as well. Wrong. I don't need a Tanakh army to defeat the Zeniths. Oh, Aloy. Have you learned nothing about the enemy we're up against? More than you, hiding whatever hole you found. My idea is just better than anything you ever came up with. Go on. No, not here. We're doing this my way. Face to face, and with the weapon you've developed. And why would I agree to that? Because I'm your only way of beating the Zeniths, and getting the copy of Apollo that's on their ship. So meet me at my base. Mountains west of Plainsong. Time to submit to the inevitable silence and follow the person who actually knows what she's doing. Don't be late. Yeah. Style है भाई, swag है लोंडिया भाई, ये बैग। Tilda, you there? I did it. Silence is on board. So head to my base. वो base पे आ रहा हमारा Silence. I'll be there as soon as I can. चलो भाई सबको इकट्ठा कर रहे हैं, खट्टी बातचीत होगी लोंडो, डिस्कस होगा भाई। लॉय ने बोल दिया तू और मैं होंगे बस, और तेरा डेवलप करा हुआ डिफेंड हुआ, तेरा बनाया हुआ। So, Aloy, you've added yet another deed to your name, and I'm guessing by the look in your eyes that you're not done yet. Not quite. Is there anything we can do? We owe you that much. After everything you've been through, you're one of the best people to support Hikaru's bid for peace. Not just between the clans, but with the Karja too. Then I will. You have my word. And until my last breath, I'll make sure the tribe remembers all that you've done for us. You decimated Regala's machine. All this knock as one.
So I asked the chaplain the other day. Aloy, that was some trick. I saw the Outlander's flag with my own eyes. If they did not reunited, Seems Regala is our common enemy. we stood certain in battle after all. तुम्हें जितना याद करता हूँ उतना रोज मरता हूँ। चल भैया आओ इधर वर्षन प्ले हो गया आते ही और भैया Hey, Mr. Know-It-All is here. You know, your focus buddy who never smiles. I didn't know what to do with him, so I had him wait in your room. Got it. Thanks. Thanks. तेरा मुझे नहीं पता तेरे बड्डी के साथ क्या करना है। वो वहाँ पे इंतजार कर रहा है तेरा। साइलेंस होगा। हाँ वही है आ गया। Well, Silence. Looks like you finally found a door you could open without me. ऐसे तो कोई दरवाजा ढूंढा तूने जो कि हमारे बिना You kept me from having to mingle with the company you keep. But enough prattle. I believe you owe me an explanation. Your plans for the Zenith base. You're right. I do owe you. My spear in your throat for deceiving me again. At the Hades Proving Lab. I doubt you asked me here for that kind of reckoning. No. Right now, I need your help. So I'm giving you one final chance. But if you ever betray me again, I will kill you no matter what the circumstance. Understood. समझ गया? Very well. Last chance देते हैं. Though we'll both face a decidedly short future if you can't get us inside that base. Aloy, your other guest is here. She's, coming to you. अच्छा एक और गेस्ट आ गया. अच्छा वो होगी टिल्डा. Good timing. वो भी The आ truth गया. is, I can't actually get us into the base. But she can. हम नहीं जाएंगे बेस पे. ये जाएगी. Yeah, क्या एंट्री मारी आंटी ने. The company you keep is even worse than I thought. Not a fan of surprises, are you? Oh, look. That must be your little invention. Does the weapon work? Without self-destructing? Of course it does. I've eliminated the imperfections and greatly improved its design and output. How can we be sure? Care for a demonstration? Enough, both of you. We're in this together, at least for now. हाँ, बाद में लड़ना. Go talk to Erend. Tell him I said to give you rooms of your own. I'll come see you when I get a chance. उससे बनाया भाई रख लेने हथियार बेंच. एक दूसरे को घूर के देखने लगे ये लोग. Oh no, you first. अरे तू फर्स्ट. कह रही अभी तो मत लड़ो तुम दोनों. अभी तो हम साथ में काम कर सकते हैं. Oh, looks like I can open that door now. हेलो कह रही थी एरेंड से जाके बात करनी है. एरेंड से. चलते बाहर. Did you see Katala's new arm? I never thought I'd see metal bound to flesh in that way. Yeah, he seems happy with it. Did you need something? यस ये ठीक रहेगा. लोग आगे भी एंजॉय. युद्ध पे जा रहे तो युद्ध वाले कपड़े पहना रहे हैं को. हाँ भाई बहुत सेक्सी सा बनवा लिया. ऐसे तो सेक्सी सी लग नहीं रही थी जब भी ये. बट अब भाई युद्ध लड़ना है. मैं फाइनल वाला हूँ तो. That is a happy thought. So, you return. Bravo. You managed to sway a Zenith to your side. Care to explain? Not a chance. I thought you said the weapon was ready. There's always room to optimize. But that's not why you're here. I assume you want to comprehend my undertakings. So, ask away. Since when were you so forthcoming? Since you turned this into a waiting game. And as it seems you have found modest success, perhaps I'm willing to be generous.
Okay, so your big plan, everything you've been manipulating for the last few months. Let me see if I got this straight. You learned about the Zeniths from Hades when you interrogated it. Then you came up with a plan to defeat them by using a Tenakth army and that weapon. And to get the Tenakth to fight for you, or rather the Sons of Prometheus, armed Regalla's rebels with override tech. Did you have an actual question, or are you still playing catch-up? So all this time, even before I found the coordinates at the Spire, you were out here scheming. Why couldn't you just tell me? When I learned of the Zenith's return to Earth, I laid out my plans. I knew I would one day require an army of overzealous Tenakth to assault the Zenith base. The casualties would be extreme. And I knew you would never allow such a sacrifice, no matter how necessary. Thus, I devised a means to remove your interference from the equation. At the Hades Proving Lab. Why create the Sons of Prometheus? You didn't need a bunch of Oseram tinkerers to make override tech. They were a necessary safeguard. My time serving Hades in the Eclipse demonstrated the risks of getting directly involved. Through the Sons of Prometheus, I could execute my plans, all while remaining anonymous. You wanted me to surrender to the Zenith at the Hades Proving Lab. They almost killed me. Based on everything I knew about them, I concluded they would find you a useful asset, thereby keeping you out of harm's way and, more importantly, out of my way. So you really didn't know they had their own clone of Elizabeth? No. Unfortunately, there was no way I could have known that particular detail. Detail? Well, I guess if it wasn't for that, we wouldn't be here today. Tell me about the weapon. How does it work? I've upgraded the delivery system. It now emits a wave-like effect covering a significant distance. That doesn't fully answer my question. No, but I'd be a fool to reveal its inner workings. After all, why did you withhold your plan for dealing with the Zenith drones? Yes, even you can appreciate the value of secrecy when warranted. Suffice it to say that the weapon will work. The intricacies of how is knowledge that is mine alone. Why help Regalla take over? If you wanted an army, you could have just gone to Hekarro. Before Regalla's rebellion, Hekarro was only concerned with battling machines and fostering friendships with the Karja. Even if I gained his ear, he would never agree to send his forces to battle a threat he couldn't understand. So helping a bloodthirsty exile was easier? Yes, exceedingly so. All Regalla craved was war against the Karja and anyone who threatens the Tenakth. She would have led the tribe into battle without question, which was precisely what I needed. While I was out there, I had a couple run-ins with the Quen. The tribe from across the ocean. And? Their entire tribe was shaped around the discovery of focuses. One of them, Alva, even joined me here. Don't you want to know more about them? No. They stumbled upon the greatest technological artifact from the ancient world, and what did they do with it? They shrouded the knowledge they unearthed in mysticism and taboo, creating a pantheon out of corporate shills. Yes, well, it also led them to Thebes. Did it now? So those run-ins with the Quen I mentioned. On one of them I teamed up with their expedition to search Thebes. We found Pharaoh at the end. You must have needed Omega clearance. So, what was it like? Worse than you can imagine. He single-handedly wiped out collective human knowledge. I'm sure it was still less than he deserved. Let me guess. You would have scraped him into a jar so you could prod his brain, like what you did with Hades. For a start. All right, Silence. I think I've talked to you long enough. I'll let you know when it's time to go. And try not to mess with Tilda while you're in here, okay? I don't need the two of you butting heads. Ah, yes. About your Zenith ally. I wonder if you understand what kind of person you're dealing with. For someone to live as long as she has, outlast as many calamities, well, your goals may be aligned now, but I'd watch for the moment they diverge.
Yeah, I'm aware. Reminds me of someone else I know. Survival is only a necessity to my greater purpose, Aloy. I'd hoped you'd recognize that by now. Do you know something or not? Oh, I know a great deal of things. But on this, you just call it a feeling. Oh, a feeling? You mean you finally had one? Huh. Guess even you can change, Silence. कैसे चेंज हो गया? फीलिंग की बात करता है. एलोय ने ताना दे दिया भाई. कह रहा फीलिंग. एलोय कह रही फीलिंग. तेरे पास भी फीलिंग है. Oh no. Got enough trouble with the भाई. Who says I'm any good at it? The rebel holdouts can't be allowed to continue their pointless fight. I see you've got your new arm ready to go. Yes. It still feels strange. I've gotten used to the absence, but no matter. I'm sure I will need it before the attack on the Zenith base is through. ये न्यू आर्मर बनाया, इससे बात करते हैं. Haven't seen you since the battle at the Grove. How are you holding up? I saw you fly on the wings of the Ten, and paralyze Regala's army with lightning. I would say that I am inspired. Thank you, I guess. It is I who should be thanking you. I have to go. But I'll be briefing everyone on the plan soon. Understood. इधर जाते हैं भाई. जा. लोगों से भी तो बात करनी थी. भूल गया मैं. एरन से. Aloy, you came back with some interesting friends. Wish I could say we don't need them. But Silence and Tilda are here for a reason. Even Regala. Yeah. Enemy of my enemy and all that, right? Right. You, talked to Tilda at all? I tried. I don't think even a hot forge could melt that ice. And you say she wants to help? I think so. Well, let's hope. I guess Silence is keeping to himself, as usual. I was hoping he'd give me an excuse to hammer his sorry ass to the ground. Please don't. You telling me you wouldn't want to get just one good hit on that smug face of his? After everything he's done? Sure. Later. Right now, he's got something we need. I better get going. Oh, you know where to find me. भाई सब 814 वॉचिंग अभी भी आ रही है. Looks like Gaia was able to unlock that door. There's a lot of equipment in here. आंटी क्या करने में हो रही floor. है? इतने बातचीत. Well done, Aloy. Despite my reservations, you managed to secure Silence and his weapon. You're truly a shining example of Liz's fortitude. Everything you've said about Elizabeth. It sounds like you knew her better than you let on. Who was she to you, exactly? No, तेरी क्या लगती है? Perceptive as ever. You're right. We were more than friends for a time. अच्छा. Okay, so... दोस्त से भी ज़्यादा थे. What happened? क्या हुआ? I was an orphan. I had always been alone. By my 30s, I was starting to wonder if that was simply my fate in life. And then I met Liz. We kept running into each other at conferences. We'd have coffee. At some point, it became drinks. I thought it was just shop talk, an exchange of ideas, but then I was surprised at how much I looked forward to seeing her. Soon we were flying halfway across the world every other week just to meet up. For the first time, I didn't feel lonely. I could imagine a future where I wasn't. I think Liz felt the same way at first. She had lost her mother a few years back. I filled a void for her. I know I did.
But as time passed, it seemed as though she wanted less when I wanted more. And so we ended things. So helping me, restoring Elizabeth's dream, it's what, a second chance, yes. I made a mistake leaving Earth while Liz stayed behind. I should have done more. So when I saw you, a woman who has carved her own remarkable path, beyond even what made Liz a phenomenon, I knew I had to help you. To do right by her. Okay. I'll let you know when it's time. I'll be here until then. And thank you, Aloy, for giving me this chance. My past has always been a struggle. More than once I've lost everything. But when I look to the future, I see Liz's dream fulfilled. A universe of new possibilities. Maybe we can make it happen. We will. I won't let anything get in the way. I promise you that. I'm gonna clean my gear later. जाते हुए इधर अपना गाया के पास. Okay. Maybe it's time to get everyone together so Tilda can brief us. गाया तो वैसे है नहीं लोग I इधर. should handle before that. गाया और बेटा को लेने गए. But I am फिर भी इधर. All right, people. I need you up in the control room right away. ये कमांड दे दी सबको. Okay. आगे सब लोग. ओ भाई. Okay, everyone. We all know what's at stake. Beta, Gaia. Not to mention life on Earth. Now, it might seem like the Zeniths are invincible, but they're not. We've got what it takes to break into their base and defeat them. We even have one of them on our side. Tilda, show us the base. मैं बेस दिखा आंटी. वहाँ पर. It is constructed atop the ruins of an ancient military facility on an island to the southwest. I can get us inside. To this location. Undetected. How exactly? You'll know when you need to. Once inside, our goal will be this structure. The launch tower. Gaia and Beta are being held at the top. But along the way, we will face overwhelming resistance. Most importantly from Gerard, Eric, and the others. But also... Once I take away their shields, we should be able to deal with them. But it will be easier to deploy the device if someone else is carrying it. I'll need a strong back. Carry stuff? Yeah, I can do that. Even if your device works, there will still be Spectre drones, scores of them. If only we had an army to fight them. I've got that under control. You'll know when you need to. All right. We'll meet up again just before we go in. Where's the best place to rendezvous? On the coast, just across from the island. Once there, I'll show you the way. Okay. I'll let you know when I arrive at the rendezvous point. And then you can join me. In the meantime, do whatever you need to prepare. Understood? समझ गया? चला हाय हाय लोग कुछ नहीं करता मतलब हाय है ना. चलो इन्हें कह दिया जब तुम लोग रेडी हो जाओ जाने से पहले मेरे से दोबारा मिलना. A minute? अरे तुम दोनों रुको. दोनों से क्या बात करेगी? आंटी कैसे देख रही है? Tilda helped me get in touch with Beta, and she told me something important. There's an installation inside the base. It's called a regulator. Here. Once we're inside, I need you two to split off from everyone else and destroy it. So you'll have to bring explosives. This will help stop the drones. Everything depends on it. Are you with me? After that, I want you to find a way to infiltrate the Zenith network.
How? Go over all the data that Beta left behind. She knew how to do it, I'm sure of that. All right. But why? What am I trying to do? Find information about the Zeniths. Anything Tilda's not telling us. Silence is right about one thing. There's no way we can take her on her word. I'll do my best. Keep her safe, okay? On my life. रखेगा चलो ने इनको ऑर्डर दे दिया कि ड्रोन उड़ाने के लिए बम वाली चीज़ें चाहिए होगी तो तुम लोग साथ में रखना, ठीक है? अभी जरूरत पड़ सकती है। बाकी लोंडो इनका प्लान डिस्कस हो चुका है कि कहाँ पे उनका बेस जीनत वालों का और गाया और पीटा को कहाँ रख रखा उन्होंने। Aloy, it's Kotalo. Thought this might interest you. 3 of our soldiers have gone missing in the Valley of the Fallen. The whole area is crawling with machines. And there have been reports of glowing lights off the coast. Marshal Vera should be at the valley's entrance. She might need your help. Thanks. I'll look into it when I can. भाई साहब कितनी खतरनाक जगह है, आंटी सही दिखा रही थी भाई, बिल्कुल वैसी जगह है लोंडो। लोंडो यहाँ पे हमारी फाइनल फाइट होगी। तुम लोग कहोगे बीएनजी भाई कब से कह रहे हो? ना ना अब तो होएगी भाई फाइनल फाइट। वो तो कहानी में ट्विस्ट लाना था ना इन लोगों को, जिंदगी खींचने की। भाई जगह मस्त है बट खतरनाक भी है साथ में। There. Rendezvous point. I should take care of everything I can before calling in the others to attack the Zenith base. Okay. आके वो बुलाते हैं। Okay, everyone. I'm at the rendezvous point. It's time to rescue Beta and Gaia. Understood, Aloy. We're on our way. ठीक है, आ रहे वो लोग। आ गए। Aloy. ये आए। Where are the others? बाकी कहाँ हैं? Not far behind. अच्छा, हमें डर लग रहा है वेंचर्स ने कुछ कर तो नहीं दिया। Egghead here couldn't stand traveling with the pack. वेंचर ऐसे बंदों के साथ रहना पड़ रहा है जिन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, बता जरा। Are we all here? भाई कितने सारे हो गए हम। Then let's begin. आंटी भाई लीड करेगी, आंटी को पता है ना भाई अपने साथियों की कमजोरी कहाँ पर है, कौन कहाँ पर बैठा हुआ, कौन कहाँ पर नहीं बैठा हुआ। ओपन शूट। A tunnel. Tunnel? An ancient escape route from the ruins on the island. When I realized it ran all the way across the water, I thought it might prove useful to come and go undetected. So I concealed it from the others. Okay. Shall we? गेम के ग्राफिक्स कैसे चेंज हो गया अचानक से, मतलब ब्राइट से अलग ही, ऐसा लग रहा है और कोई गेम खेल रहा है ना भाई। होराइजन की ये तो बात अच्छी लगती है भाई, कलर्स ऐसे चेंज हो जाते हैं इसमें अलग से। I wish there was a less pungent way to get way inside the base. Agreed. अरे हाँ याद आया, एल्वा को क्यूट बोल देते हैं वर्मा भाई। जो शिल्पा कह रही थी तेरी बहन से चुगली लगाऊंगी, वर्मा भाई रो रहे थे, कह रहे बीएमजी भाई देख लो। भाई मेरे को नहीं पता भाई, आके यार कोई चुगली उंगली मत लगाओ यार, स्टीम पे सब मजे मारने आते हैं। There's the launch tower. That plane offers a little cover, so the only viable path is through there. There will be specters guarding it, and many more can be deployed from those hangars. All right. Alva, Kotalo, get to it. Where are they going? Somewhere important. आंटी बड़ा पूछती रहती है कौन कहाँ जा रहा है, लोए कह रही कहीं इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं। You guys, take the high ground in case we need covering fire. एलॉय ने बनाया था ना प्लेन, तो स्पेशल उनके साथ अकेले में भी लोगों ने देखा ही था। कह रहे ये क्या There's a करेगी? sensor node nearby. If I hack into it, I should be able to scramble the network and keep you undetected. But not for long. Then we should proceed. पता नहीं आंटी पे मेरे को विश्वास नहीं हो पा रहा अभी भी। One more thing. Open up the channel to Beta. Audio only. Aloy. We're here.
And we're coming for you. You know what to do, right? As long as you hold up your end. We will. See you soon. Be careful. Let's go. आंटी हर एक चीज पूछेगी हम क्या कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं। उन दोनों के साथ तो हमने प्लान बनाया था अलग से, एल्वा और पटालो के साथ। तो एलोय ने भेज दिया उनको प्लान के। तुम दोनों जाओ अपना बटो, जो तुम लोग बताया था वो करो। Follow my lead. That's what I do. Acid ammo could help here. एसिड एमो आप हेल्प कर सकते हैं, एलोय कह रही है। ठीक है, यूज करके देखता हूँ। एलोय कह रही है तो। I think there's a cave up there that might get us through that ridge. Let's climb up to it. चढ़ जाएंगे अरे भाई। बाकी वर्मा भाई की हालत बुरी हो गई। शिल्पा कह रही तेरी बहन से बताऊंगी, फिर तू लड़कियों को क्यूट बोलता रहता है। मोबाइल रोते हुए कह रहा है बीएम जी भाई देख लो चुगली करेगी मेरी बहन से। अरे ऐसे चुगली मत करा करो भाई, मजे मारने आते हैं सब, एक दूसरे की चुगली नहीं करते हैं, ऐसा गलत बात होती है। लाइव स्ट्रीम पे तो यार सब खुल पाते हैं आराम से, जिंदगी में कोई मजे मार पाता है अच्छे से। मैंने लाइव स्ट्रीम लाइव चैट इसलिए बना रखा है ऐसा कि भाई तुम लोग आराम से बकचोदी कर सको, जो बातें तुम लोग रियल लाइफ में नहीं कर सकते तुम लोग लाइव चैट पे कर सको आके खुले में, कोई डर नहीं किसी बात का। क्या मजाक कर रही थी बीएमजी भैया? अरे तुम तो मजाक कर रही थी मेरे को पता है, बट वर्मा भाई के तो के चार हो जाती है ना, वर्मा भाई ड्रामे पेलने लगते हैं। अरे अब क्या होगा अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। 814 वॉचिंग। अरे आलिया तुमको और कोई वॉचिंग नहीं मिली बहन जो 814 वॉचिंग? वालिया कहीं मेरे ऊपर थोड़ी था, मैंने यूट्यूब क्या मेरे पड़ोस का अंकल है। अब मुझे पता है तुम्हारे पड़ोस का अंकल नहीं है यूट्यूब, बट फिर भी वॉचिंग आप ही क्या रही है लोडो 814। जब भी तो बार बार छुते जा रहे हूँ, कभी बेंचो लाइट जा रही है, कभी बेंचो वाईफाई जा रहा है। What's in this backpack, metal bricks? Aloy, Alva and I are closing in on the regulator. Keep me posted. It's creepy in here. Don't worry, I'll protect you. प्रोटेक्ट करेंगे तेरे को एरेंट। हेलो कैसे बोलती है? Don't worry, I will protect you. वाह वाह। There's a lot of dead machines on this island. We killed a great many when we landed here. Their salvage may prove useful to you now. Another Spectre. Sneak or fight, you choose. देखा करूं तुझको ही मैं, सुना करूं तुझको ही मैं, भाई कैसे हाँ कैसे हो गया। Tired yet? मैं तेरा हो गया, ओ मैं तेरा हो गया। Those mines now. With who? We can take this one, Aloy. Keep moving. That Stormbird carcass should get us over the gap. I hate Stormbirds. But I guess, yeah, dead ones handy enough. Hey, you remember the good old days when our only worry was whether Meridian would be destroyed? You know, instead of a whole world? Oh yeah. Good times.
Fire's not gonna help here. कर लेंगे भाई, कर लेंगे अकेले। एरेंड तू रहने दे, मुसीबत में पड़ गया और दिक्कत हो जाएगी, तेरे को भी बचाना पड़ेगा। ऐसी मुसीबत बहुत हो रखी है, गाय और बेटा किडनैप हो रखी है। ये जो चीज़ डाली ना इन लोगों ने, एलोय ऐसे लगाती है भाई, बड़ा मज़ा आता था वो। अरे एरन चुप रहे ना, एरन चिल्लाया जा रहा है बार बार। अरे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। Let's push on. Find anything? Here, up this rock. We're gonna have to climb around this corner. I'm trying not to complain. I can see the way forward. Keep moving. As fast as we can. You all right? Sort of. Looks like the others have things under control. Hey, this here. This will help. How many specters does the Zeniths have? Well, I want to fight at once, that's for sure. Aloy, Alva and I are in position. Do it. Blow the radiator. A moment while I ignite the charges. They won't like that. That's the weak spot. Alpha and Catalo did their job. Now it's Beta's turn. Aloy? I think we're in trouble. Whatever you plan to do to stop those specters, you better do it now. I'm not doing anything. Beta will. She just needs a little time. Time that we don't have. Come on, Beta, come on, come on, come on. What is that?
army. I think you got their attention. ओ भाई साहब 1000 वॉचिंग ओ फैन शोध. Very clever. You had Beta inject Hephaestus into the base's printer matrix. Which is faster and more powerful than any cauldron. And now it can crank out machines to its heart's content. Let's get to the launch tower before this whole place becomes a war zone. Your maneuver, as clever as it is, means that Hephaestus has escaped containment. It will no doubt flee back to the Cauldron network. We grabbed it once, we'll get it again. Or find a way to replicate its functionality, perhaps. The Apollo database. But a big rock might give us a bridge to get up and through. Gotcha. I guess not all the Spectres are fighting our machines. Ah, because that'd have made it nice and easy. Big jump. Looks like we snuck through. To the right, I think. And now to the left. You can get to the launch tower through the hangar up ahead. I'm heading over to join you now. The hangar's in bad shape, but I can see the way in. Hurry, Aloy! By the blood of the ten! भाई 1.1 के वॉचिंग भाई, बड़े यूट्यूबर्स को भी पीछे छोड़ दिया भाई. वर्मा भाई सही कह रहे थे, बीएमजी भाई गेमिंग स्किल्स में तो पीछे छोड़ देते, आज तो वॉचिंग में भी पीछे छोड़ देंगे भाई साहब. I've got an angle. As do I. Gotcha. Now burn. Good work, everyone. Let's go. ये जो हुआ तू ही तो है इसकी वजह. Space stuff. अंश भाई कह रहे हैं 1.1 के वॉचिंग हो गई, अब तो ज्यादा ही कमाल कर दिया. वही तो Come on, let's go. भाई मेरा 50% नेट फूक चुका है लोंडो. This way, demon. अरे आंटी ध्यान से भाई, आंटी मरमुरा मत जाना जोश जोश में. तगड़ा गिफ्ट आ लिया थी. अरे भाई सच में भाई. This is the death I was promised. Go! May Regala return peacefully to the cycle. Please. She cared nothing for peace.
At least she died on her own terms. Not as a puppet. Aloy, it's been intense, but Cataldo got me to a network node. I'm trying to get in. Keep at it. We're almost to the tower. क्या वेट करो कुणाल, और वॉचिंग आ जाएगी थोड़ी देर में। आ ही गई, थोड़ी देर में गेम खत्म होने वाली है, बट 1K वॉचिंग के साथ एंड करोगे स्ट्रीम तुम, और ये मेरा प्रॉमिस है। लो हो गई 1K वॉचिंग खुश। जब अरे आलिया कमाल कर दिया, गेम एंड होते होते आग लगा दी वाईटी पर। वही तो फाइनली 1K वॉचिंग हो गई। बड़े यूट्यूबर्स को टक्कर दे दी सीधा अब तो वॉचिंग में भी। वही तो लोंडो, गेमिंग स्किल्स में तो कब का पीछे छोड़ दिया उनको। Now we know who's been causing all the fuss. Tilda's little pet. लिटिल पैट कह रहे हैं हमें, भैंचो दिन की फौज है भाई इनकी तरह। अरे भाई सब बचे हम। Silence. Zenith's inbound. Can we drop their shields, please? हाँ, शील्ड तोड़ सकता है इनकी जल्दी से। यार रुक जा, मैं कर रहा हूँ, पावर अप कर रहा हूँ। You can't hurt us. कह रहा है Face it. तुम लोग Your worms that ooze to the कोड नहीं cracks फंसा into सकते our हमें। basement. बेंचल को सुनाई दे रहा है। One moment more. जल्दी करना, But I might साइलेंस। just spare you if you give up Tilda. I think it's safe to say she's forfeited her share of our operation. Permanently. जल्दी कर भाई, No? ऐसा ना हो कहीं काम ना करे इसका हथियार। Fine. All right, people. Light 'em up. ले बेंचोद। ओ भाई अटैक हो रहा है मुझ पे भाई साहब। शिट जल्दी कर, साइलेंस हो गया। चाय फेंकेगा ऐसे उत्तरी, देखते हैं भाई इसके पैर का कमाल। लोंडो क्या होता है, वो तो छोड़ा हो रहा था बड़ा। इनका लीडर कह रहा है तू चोट नहीं Are we पहुंचा सकता। मैं supposed to be scared? तेरा में डरना चाहिए, देखते हैं भाई। उत्तरी का हट गई भाई शील्ड इन सबकी। ओ भाई सच में कमाल कर दिया भाई, कमाल कर देता भाई साहब साइलेंस भाई ने तो। ओ भाई साहब, ओ भगे भाई भगे। ले बहन चौक गाड़ मरे इनकी बहन चो। ले भाई आ गए, ले भाई पकड़ के ले गए बहन चो। यस कर दिखाया लोंडो हमने। We can't let Gerard escape. It won't take long before he preps the shuttle for launch. Then he'll be able to take Beta and Gaia into orbit and onto the Odyssey beyond our reach. We gotta go through there? I fail to see another option. Then we'll carve a path. Ready? Get to the top and secure Gaia. I'll stop Gerard. थोड़ा लेट हो गए 800 वॉचिंग से 1K करने में, बट हो गया। मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट करा कुणाल। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा मेरा बर्थडे के छोटू सा, बट इससे बहुत I gotta get to the top of the tower and free Beta. फायदा होगा, और हो भी गया चैनल को। अरे बहुत अच्छा गिफ्ट है यार, यूजफुल गिफ्ट है, सही कह रही थी तुम। We're okay. Long as Alba hurries. I'm almost into the network. Just do the best you can. लोंडो आधे घंटे की बच रही है गेम, 20-30 मिनट की बस अब। Okay, an elevator. Promising. जैसे होराइजन जीरो डॉन हमने 4:30 बजे खत्म करी थी, इस गेम को भी हम 4:30 बजे बंद करेंगे। ओ भाई साहब खत्म करेंगे मतलब। अरे भाई अंकल कहाँ से आ गए, मुझे पता था ये आएगा साला। भगा था ना जब ओसी वाले, तेरी शील्ड हट चुकी है। ओ भाई ये कहाँ भेज रहा मैं? अच्छा कह रहा जो फाइट अधूरी रहेगी तो फिनिश करता हूँ। अच्छा बोझ रही कि तेरे पास कवच नहीं है। वो साले की शक्ल देखो एक बार दल्ले की, पैंचो कैसे उठा दिया भाई हमें। ओए ओए अलोय अलोय नहीं, पैंचो तो गिर गई। शिट ओए होए। I don't need a shield to take you out.
Trust me, you're gonna wish you had one. चलो भाई निपटते हैं लोंडो इससे। कह रहा तू मेरी शील्ड बिना भी कुछ नहीं उखाड़ सकती तू मेरा। Can't let him catch me. मेरे पास शील्ड नहीं है बट फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ सकती मेरा। अच्छा अभी बताते हैं तेरे को। ले दी वो तो। अच्छा बेबते। अरे भाई अरे बच्चा समझ रहा है। पानी कब का खत्म हो चुका है मेरा होटल में। वही स्टीम एंड करूंगा ना जब रोल की स्टीम स्टार्ट 6 बजे हम स्टीम बंद कर देते हैं। लग रहा है मेरा नेट खत्म हो गया लोंडो। 50% तो फूक गया था अभी। कोई बात नहीं गेम भी होंगे मेरे। बाकी मैं निपटा रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी लोंडो। निपट जाना अंकल मेरा। वाईफाई है ना इसलिए मेरे को आंधी को अपनी मरवानी थी ना। आंधी भाई शहर के अंदर नहीं मेरे करीब में हरा दिया। ओ भाई ये मारेगी इसको तो बहन जो साले वाल को मारा था ना मेरे बंदे को। भाई साहब ले लिया साहब। नाइस क्लोंडो सही अंत हुआ है अंकल का साले। You okay? I will be. I'll regroup with the others and make sure they're all right. Looks like the machine's inspectors have almost wiped each other out. What was that? Aloy, Gerard just activated the self-destruct failsafe on the printing matrix. He's taking control of a number of systems. Including the lift? I'm afraid so. He's restricted its access to the top. चढ़ जाएंगे yes. Aaron, is everyone all right down there? Mostly. We're cleaning up the last few speck. Zoe told me you got Aaron. Thanks. Listen, I got a bunch of flight plans and trajectories, as if the Zeniths were planning to leave Earth. Doesn't make any sense. I know, but there's more. The files I found, whatever it is, the Zeniths are afraid of it. Alva? Alva! प्ले डाउन कर लो नेट के का। बाकी तुम लोगों को मैंने बता दिया मेरा 90% नेट फूक चुका है। नाम का अनलिमिटेड देते हैं साले जियो वाले। एक्चुअल में 25 GB देते हैं। तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। तो 25 GB बेंच ऐसे फूक जाती है। टीम करना कोई मजाक। जीबी यूज़ कर लेता हूँ। एक टीवी जीबी में नहीं टीवी 2-3 टीवी इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं एक महीने में वाईफाई से। अब सोच मैं जो वॉचिंग आ रही तो नेट खत्म हो रहा है साला। Are you okay? Look, I know you've been through a lot, but you have to help me toward Nemesis. Okay. Over there. The systems are down all over. Yes, Nemesis. Here. Deep space. It's following the Zeniths to Earth. Look. Escape vectors. Alva tried to warn me about this. The Zeniths aren't planning to stay here. The energy readings are... Aloy, I don't think a natural disaster destroyed the Zenith colony on Sirius. Earth isn't a new home for them. It's a way station. They're on the run. अरे भाई साहब ये कहाँ से आया उड़ता हुआ?
ये कौन कर रहा है अटैक? अच्छा आंटी बदला ले रही है बेंच। सही है भाई सही है। कोई सोच रहा है बेंच इस पे किसी ने अटैक कर दिया। I see you've been busy. And you've been lying. Nemesis, what is it? क्या है ये आंटी? झूठ बोल रही थी It is हमसे। us. Failed copies of them anyway. Back on Sirius, some of my peers weren't satisfied with physical immortality. They wanted digital transcendence, or mechanical. Nemesis was a failed experiment to that effect. Abandoned, but never erased. An immense database of our memories, And it destroyed your... until it broke containment. It had everything it needed from our memories. Security protocols, system specs, override codes. It hacked everything before we knew what hit us. Then it took over our printing facilities, allowing it to gain any machine form it needed to wipe us out. But why? Imagine being trapped alone for decades with only the twisted echoes of megalomaniacs for company. It hates us for abandoning it to that prison. And now that it's free, it will do anything to destroy us, including denying us a safe harbor on Earth. The extinction signal that woke Hades. You didn't send it. Nemesis did. Finally, you understand. And when that failed, it launched from Sirius to finish the job itself. Which is why we must flee the plan. Even now. Earth is finished, Aloy. Nemesis will... But Elizabeth's dream won't die. You'll come with me to the stars. And with Gaia, we'll create a new world. Or find us. What? No. I loved Elizabeth. More than you could ever know. A mistake I have regretted for 1,000 years. Now she stands before me again. Not some inferior copy, but her best possible self. So I'm not asking. You're coming with me. It may seem harsh now, but you'll forgive me in a few centuries. You can't force me, Tilda. Your shield is gone. I have something better. Spectre Prime, to me. अरे भाई क्या बुला दिया आंटी ने? एलोय ने बोला था तेरी शील्ड चली गई है, बट आंटी ने पता नहीं क्या बुला लिया भाई हमसे लड़ने के लिए। भाई साहब ले भाई इसमें घुस गई भाई अपने इसमें। तो लौंडा अब हमें ये आंटी से निपटना पड़ेगा। पता था मेरे को आंटी से फाइट करनी पड़ेगी एक ना एक दिन, तो वही हो रहा है लौंडो।
gold plates are vulnerable. This won't work, Tilda. There are no answers in death. Sticks and stones against the lightning. Elemental ammo is making a dent in those gold plates. Is this where you want to end your journey? Acid's eating away at it. Now to follow up. A few more hits. अरे भाई साहब It's over. Why couldn't you just let me choose? Yeah, this live stream performance watching 1.1k plus likes 600 likes live chat rate high subscriber gains 5 ओके मान लिया परफॉर्मेंस भी बता दी भाई अभी से इसने 600 लाइक्स आ गए भाई साहब अब वॉचिंग ज़्यादा थी तो लाइक भी आएंगे And she told you about Nemesis. So you've known all along. From Hades, yes. Along with data on how to circumvent the Zenith's shields. Everything I did to create the rebel army was based on that knowledge. To reach this place, this moment. And you couldn't just tell me? Come now, Aloy. You're the last person to act sensibly in the face of impossible odds. When I learned of Nemesis from Hades, I saw the pieces on the board and how to play them. And in that same moment, I knew it was a game you would never play. That you would interfere and attempt to save the Tenakth. I was correct, to a point. You ruined my plans, but brought your own to fruition. The end result is the same. We're here. And now it's time for me to leave this doomed planet behind. To seize the Odyssey and the Apollo database, and begin a new chapter in my pursuit of knowledge, one with infinite possibilities. You can join me if you so desire. You've more than earned your place. Unlike Tilda, I'm extending a polite invitation. You're going to just take off? And abandon everything? Stay. Help me fight that thing. Perhaps Tilda didn't adequately define the threat. Nemesis can't be stopped. It destroyed a highly advanced Zenith colony in a matter of hours. What hope does this primitive tribal Earth have? If you brought Gaia, you wouldn't be abandoning life, you'd be saving a seed for a new world. Just as Elizabeth did. It's the choice she made. The sacrifice of all that is for the hope of what might be. If she were here in your place, she would board that shuttle, Aloy. Found her. Is she hurt? Still on her feet. Thank the 10. Goodbye, Silence. पूरी गेम में गांडूपंती करी इसने बट एंड में इसने हमारा साथ दिया चलो भाई अपने अपने रास्ते हो गए सब She looks victorious. As always. Aloy. You did it.
क्या ये गेम बस एंड नहीं हुई है, ये गेम एंड होते होते बहुत कुछ देगी चैनल को और हम सबको। गुड बाय होराइजन 2 सही का पलक। As far away as anyone can go. Oh. Are you sure? You're staying. For a time. You people are going to need all of the help you can get. Does anyone else need a drink? Not if it's that ale of yours. I'd be fine with a nap. Excellent एल्वा कह रही है idea. मैं सो जाऊंगी, मेरे को नहीं करनी ड्रिंक। मेरे नींद ही I काफी hope है। it's really over this time. लोंडो बहुत कुछ खोया हमने, बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों ने रंग बदले, बट बहुत लोगों ने साथ भी दिया रंग बदलने वालों ने इस सफर में। वाह लोंडो, फील करो। .1 के वॉचिंग, नाइस। आज तक की सबसे बेस्ट There's another लाइव स्ट्रीम battle होगी ahead. मेरी है। Elizabeth. Carry another battlefield, Elizabeth. Very different than the one you fought. तेरी बहुत डिफरेंट फाइट थी जो तू लड़ी थी। गायक एक्टिवेट कर रहे हैं लोग फिर से यहाँ पे। It's not about the distant hope of creating a new world. ये सारे फंक्शंस आ गए गाया के अब। It's about preserving the one we have. My friends have a new mission. To spread the word and ask for help. They've taken it in stride. I think it's because they've always known what I've only just started to understand. That the people of this world have the strength to fight any battle. The ingenuity to solve any problem. Courage to overcome any obstacle. And the resilience to rise after any setback. As for me, I can't say I'm not afraid. What lies ahead will be harder than anything we've faced before. But I know I can put the fear aside. Because for the first time in my life, I feel like I'm not alone. तो लोंडो, 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 हमारी ये गेम भी कंप्लीट हो चुकी है। एक तरह से ये कह सकते हो हमारी होराइजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो हमारी ये एवरी डे विद मी सीरीज है जिसमें हम अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं, ठीक है। पहले ये सीरीज में हिंदी डबिंग के साथ लाता था तुम लोगों के लिए, ठीक है, बट लोग इतने लायक भी नहीं है कि उनके लिए मैं हिंदी डबिंग वाली वीडियोस अभी भी लाऊं। तो हमने ये गेम भी लोंडो कंप्लीट कर दी एक तरह से। हमारी जो होराइजन सीरीज थी, मतलब कि होराइजन पार्ट 1, होराइजन 0 डॉन 2 और होराइजन 2 जो कि हमारी ये थी होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। तो लोंडो हमने ये गेम भी कंप्लीट कर दिया है। यस, बहुत ही अच्छी गेम थी लोंडो। एक तो मेरे को लाइव चैट नज़र नहीं आ रहा तुम लोग के कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जब से ये लाइव स्ट्रीम बंद हुई थी ना बीच में, जब से नेट गया था, जब से तुम लोग के मेरे को लाइव चैट नज़र नहीं आ रहा कंप्यूटर में। OBS कह रहा है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। कोई ना भाई, रुक जाओ, रिफ्रेश करता हूँ मैं। आप दिखाई दे रहे हैं, होल चैट पे करा ना, अब पढ़ता हूँ।
सही कह रही है पलक, ये गेम एंड नहीं हुई है, बस बहुत कुछ दे के गई है ये हमें गेम और हमारे चैनल को भी। गुड बाय होराइजन 2। हाँ गुड बाय होराइजन 2 को। क्या गेम थी बीएमजी भाई, नाइस गेम भी भैया। थैंक्स शिल्पा, मजा आ गया बीएमजी भाई। हाँ तो लोगों 4:30 बज गए, बेशक उस दिन की तरह होराइजन जीरो डॉन की एंडिंग की तरह, ठीक है, बट खुशी हो रही है हमें, ठीक है। जब अच्छी गेम हो ना तो भाई टाइम देते हुए दुख नहीं लगता, वर्थ इट है, ठीक है। आज भी हमने 4:30 बजाए दिए लोंडो। ओ भाई साहब, उस दिन तो तुम लोग आधे चले गए थे 4 बजे ही, क्योंकि तुम लोगों को स्कूल जाना था। फिर भी 4 बजे तक तुम लोग टिके उस स्ट्रीम में, ठीक है। फिर भी तुम लोग 4 बजे तक टिके, वही बड़ी बात है। बाकी हमारी वॉचिंग अब घटना चालू हो गई है, मतलब अब लोग जाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया हमने गेम कंप्लीट कर दी है। 1.1 के वॉचिंग आ रही थी अभी, ठीक है। अब पहले 1000 हुई, फिर 900 हुई, अब 800 हो गई। कोचिंग घटना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि लोगों को पता चल गया भाई अब गेम कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्वियसली अब लोग करेंगे भी क्या है किस टीम में। तो लोगों हमारी ये गेम भी कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, एंड हो चुका है, इस गेम का समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए अब ये स्ट्रीम को भी यही एंड करते हैं, खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छी गेम थी लोंडो, नाइस, मजा आ गया, ठीक है। हमारी एलोय का सफर खत्म तो नहीं हुआ ना उसके दोस्तों का। अभी वो एंड में कहानी बता रही थी एलोय सबकी, कि मेरे दोस्तों को नया मिशन मिल गया, वो अलग अलग मिशन पे चले गए। साइलेंस अपना फिर से स्टडी में लग गया कि ओल्ड वंस कैसे मरे, ये वो तुम लोग पता ही है। पूरी गेम में साइलेंस को चुल मची थी, प्लास्टिक का कीड़ा था उसके पिछवाड़े में, वो घुसा रहता था, ठीक है, इन सब चीज़ों में। बाकी हमने जिन जिन लोगों से नफरत करी उन लोगों ने हमारी मदद करी, ठीक है। बट आंटी ने बाद में औकात दिखाई दी अपनी, है ना। बट साइलेंस भाई एंड में उसने कमाल कर दिया, seriously, उसके बिना हम नहीं कर पाते। एलोय ने उससे ढंग से पूछा था कि तू मदद करेगा हमारी, और एलोय ने कहा था लास्ट चांस दे रही हूँ इस बार, अगर तूने फिर से धोखा दिया मेरे को तो मैं सोचूंगी नहीं कि क्या वक्त से चल रहा है, कौन सी जगह है, मैं तेरे को मार दूंगी, ठीक है। तो हाँ तुम लोगों से एक बात करनी है, ठीक है। ऐसे 1000 वॉचिंग आई भी तो मैं आधे घंटे में आई एंड में, कोई बात नहीं, थैंक यू आलिया, ठीक है। आई तो वॉचिंग लास्ट में आई, आधे घंटे लास्ट 30 आवर्स में आई, 30 आवर्स सॉरी, लास्ट 30 मिनट्स में आई 1.1 के वॉचिंग। ऐसे तो पूरी टीम में 814 वॉचिंग थी, ठीक है। कभी 814 आ रही थी, कभी 809, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। बट 800 वॉचिंग थी पूरी टीम में, बट लास्ट 30 मिनट्स में 1.1 के वॉचिंग क्रॉस कर गई, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। करी तो 1 के वॉचिंग क्रॉस करी भाई हमने, पहली बार, फर्स्ट टाइम चैनल पे। व्यूज़ तो हम बहुत बार लाए, हम नॉर्मल वीडियोस पे 1 के व्यूज़, 8 के व्यूज़ भी आ रखे भाई एक वीडियो पे तो, मेरी माइनक्राफ्ट वाली वीडियो पे तो 8 के व्यूज़ थे। तो व्यूज़ से मेरे को मतलब नहीं है भाई, वॉचिंग आई है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है लोगों। बाकी लाइक्स भी अच्छे खासे आ गए हैं, 600 लाइक्स क्रॉस हो गए हैं, ठीक है। वॉचिंग आई तो लाइक्स भी आए हैं, इसका मतलब ओरिजिनल बंदे थे भाई सारे। तो क्या कह रहा था मैं तुम लोगों से, हाँ तुम लोगों से एक बात करनी है भाई। 4:30 तो ऐसे ही बज गए लोगों, गेम खत्म करते करते। अब रोब्लॉक्स कब खेलेंगे हम? तुम लोग कहोगे बीएमजी भाई धोखा दिया है, धोखा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखो। अरे नहीं नहीं भाई, धोखे वाली बात नहीं। एक बार तुम लोग खुद से सोचो लोडो, मैं तो खेलने को खेल लूंगा अभी तुम लोगों के साथ, बट एक बार तुम लोग खुद सोचो, आधा घंटा तो हमारा यहीं चला गया, 4:30 हो गए, ठीक है। अभी हम स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे 5 बज जाएंगे, 5 से 6 बज जाएंगे, और 6 बजे हम स्ट्रीम बंद कर देते हैं, ठीक है, अपनी रोब्लॉक्स वाली सुबह के। तो हम रोब्लॉक्स अब कब खेलेंगे लोंडो, है ना। बाकी मुझे पता था लोंडो ऐसा सीन होगा, तुम लोग चिंता मत करा करो यार, चिंता मत करा करो कि बीएमजी भाई गंदे है मुकर जाते बात से। ना 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 ना, मैं कभी नहीं मुकरता लोंडो, तुम लोगों को पता ही है, तुम लोगों को पता ही है। तुम्हारे बीएमजी भाई प्लान बना के चलते हैं, तुम्हारे बीएमजी भाई को सब पता रहता है कि कौन सी गेम कब खत्म होएगी, ठीक है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था तुम लोगों से कि ये गेम 6 घंटे लगाई खत्म होने में। तो बता देता हूँ तुम लोगों को, मैंने बताया था तुम लोगों को कि आज संडे की रात को हम सीरीज की स्ट्रीम नहीं करेंगे, मस्ती वाली स्ट्रीम करेंगे। और मस्ती वाली स्ट्रीम में मैं क्या कहा था, चाइल्डहुड वाली गेम्स खेलेंगे और रोब्लॉक्स खेलेंगे तुम लोगों के साथ। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारे बीएमजी भाई को पता था, और मैंने ये बात तुम लोगों से पहले कह दी थी स्ट्रीम के स्टार्टिंग में कि लोंडो हम संडे के दिन, ठीक है, मतलब कल, अब तो अगला दिन लग चुका है, मतलब आज संडे की रात को हम सीरीज की स्ट्रीम नहीं करेंगे, एवरीडे विद मी सीरीज की, मतलब कोई गेम स्टार्ट नहीं करेंगे आज से।
आज हम मस्ती वाली स्ट्रीम करेंगे तुम लोगों के साथ, ठीक है। मुझे पता था रोब्लॉक्स नहीं खेल पाएंगे हम ये गेम कंप्लीट करेंगे तो, क्योंकि 4:30 तो ऐसे बज जाएंगे और वही ऑलराउंडर 4:30 बज गए। इसलिए अब 1 घंटा रोब्लॉक्स की स्ट्रीम करके क्या करेंगे लोडो, तुम लोग पता ही है 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि बीएमजी भाई ने हमारा चूतिया काटा, ठीक है, बट तुम लोग को जगना होता ही है और तुम लोग को हर गेम देखनी होती है। तुम लोग कोई एक पर्टिकुलर गेम के लिए तो हो नहीं यहाँ पे, है ना, तुम लोग को पता ही है। मुझे इतना विश्वास है तुम लोगों पे कि तुम लोग एक पर्टिकुलर गेम के लिए तो जगते नहीं हो स्पेशल, है ना। बाकी आज तो संडे था वैसे भी, तो जगना तो बनता ही था, ठीक है। तो चिंता मत करो, आज खेलेंगे रोब्लॉक्स तुम लोगों के साथ। पहले चाइल्डहुड वाली गेम्स खेलेंगे उसी स्ट्रीम में, ठीक है। बाकी सब कुछ रेडी है। और बाकी हमारी दोपहर को कौन सी गेम चल रही है और शाम को कौन सी गेम चल रही है, दोपहर को हमारी चल रही है बियॉन्ड द टू सूट्स, ठीक है लोडो। उसका एपिसोड 3 स्ट्रीम करेंगे और शाम को हमारी ड्रैगन डोगमा 2 चल रही है, उसका भी एपिसोड 3 स्टार वो स्ट्रीम करेंगे और 3 स्ट्रीम करेंगे उसका भी। और कल कल शनिवार से ही हमने दोनों गेम्स कंटिन्यू करना स्टार्ट करी अपनी पेंडिंग गेम्स। बाकी रात को हमारी लिस्ट वाली गेम्स चल रही है, तुम लोग पता ही है। बाकी आज संडे है तो स्पेशल स्ट्रीम करेंगे मस्ती वाली तुम लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि आज हम कर नहीं पाए स्ट्रीम तुम लोगों के साथ, रोब्लॉक्स खेल नहीं पाए, मस्ती वाली स्ट्रीम कर नहीं पाए, तो इसलिए आज रात को करेंगे, ठीक है। मेरे को तो वैसे भी करनी थी, बट अब तो और करनी पड़ेगी संडे को स्ट्रीम, ये वाले संडे को, आज मतलब रात को रोब्लॉक्स की, क्योंकि तुम लोगों के साथ रोब्लॉक्स नहीं खेल पाया। तुम लोग को इंतजार होता है कि सैटरडे नाइट बीएमजी भाई का सैटरडे है, ठीक है। बट बीएमजी भाई ने तो चूतिया काट दिया, चूतिया नहीं काटा लोंडो, स्ट्रीम करेंगे आज, ठीक है। संडे को करेंगे, उल्टा उल्टा ज़्यादा टाइम रहेगा लोंडो तुम लोगों के पास। एक बार तुम लोग खुद सोचो, हम गेम कंप्लीट करते हैं 1-2 बजे स्टार्ट करते हैं रोब्लॉक्स की स्ट्रीम, ठीक है। और बट तुम लोग आज सोचो, आज हम 10 बजे ही रोब्लॉक्स खेलना स्टार्ट कर देंगे तुम लोगों के साथ, ठीक है। 10 बजे तो नहीं, बट 10 बजे स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रीम, तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट हम चाइल्डहुड गेम्स ट्राई करेंगे अपनी, ठीक है। बट एक बार सोचो, हम रोब्लॉक्स वाली स्ट्रीम जल्दी स्टार्ट कर देंगे तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के लिए 10 बजे ही, तो सोचो कितना ज़्यादा टाइम मिलेगा रोब्लॉक्स खेलने का, है ना, तुम लोगों के साथ। इसलिए खुशी मनाओ, अभी नहीं खेल पाए कोई बात नहीं, बट आज रात को खूब खेल पाएंगे, ठीक है। माना कि कल मंडे है, स्कूल जाना होगा, बट खेल लेंगे लोडो बहुत, फिर भी 2 बजे तक, ठीक है, रात को 4-5 घंटे ऐसे ही खेल लेंगे। अबे कुछ रिप्लाई भी दे दो, तुम लोग मुर्दे बन गए एकदम से, तो तुम लोग संडे क्यों हो जाते हो अचानक से, मतलब गेम खत्म होगी तो मतलब तुम लोग भी बगलोगे हैं, बाकी के 800 लोग तो भगना स्टार्ट हो गए हैं। नहीं अभी भी है भाई, 800 लोग है, मतलब 1000 लोग तो भगना स्टार्ट हो गए, तुम लोग भी बगलो, है ना। तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ मैं स्पेशल गेम खत्म होने के बाद भी, कि कैसे कैसे क्या प्लान है, रोब्लॉक्स कब खेलेंगे। तुम लोग खुशी नहीं मना रहे हो, ना कुछ बात कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो। अबे हाँ हूँ तो कर दो कि हाँ बीएमजी भाई कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा आज रात को तो हम रोब्लॉक्स की स्ट्रीम करेंगे सीधा, उल्टा ज़्यादा रोब्लॉक्स खेलने का टाइम मिल जाएगा। अंश भाई से उम्मीद कर रहा हूँ मैं, अंश भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। अंश भाई उदास तो नहीं हो गए, निराश तो नहीं हो गए। मैं दिमाग लगा के ही कर रहा हूँ जो भी प्लान कर रहा हूँ। एक बार तुम खुद सोचो, हम 1 घंटा खेलेंगे क्या रोब्लॉक्स अभी स्ट्रीम करेंगे तो, नहीं ना। तो इसलिए जो आज रात को स्ट्रीम करेंगे, मैंने तुम लोगों से पहले ही प्लान बना लिया था, तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया कि आज रात को हम जो संडे को स्ट्रीम करेंगे रोब्लॉक्स की करेंगे, मस्ती वाली स्ट्रीम, ठीक है। मुझे पता था क्योंकि ये गेम कंप्लीट करने के बाद टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। आज रात को लाइव वो मस्ती वाली लाइव स्ट्रीम करेंगे, फिर इसकी स्ट्रीम नहीं करने वाले, ठीक है। बाकी कल मंडे से देखते हैं कौन सी गेम स्टार्ट करेंगे, बाकी मैंने तुम लोगों को बता दिया था कौन सी गेम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है लौंडो, अभी स्ट्रीम एपिसोड ही एंड करते हैं। सारा प्लान मैंने तुम लोगों से डिस्कस कर लिया है, तो तुम लोग भी अपना टाइम से सो जाओ, ताकि जब मैं 1 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करूँ बियॉन्ड दी टू सूज की, तो तुम लोग टाइम पे आ सको, ठीक है। संडे है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी स्टार्ट कर दूँ, बाकी मेरी नींद पे डिपेंड करता है। वैसे तो अभी नींद नहीं आ रही, बट मेरे को सो जाना चाहिए। मेरे को तो नींद तो कभी नहीं आती है, मेरा यही तो सीन है लोंडो, नींद ना आती मेरे को कभी। भैंचो जब मैं जग लेता हूँ ना ज़्यादा देर तक, जब भैंचो बहुत हफ्ते तक जगता रहता हूँ, नींद नहीं पूरी करता, बाद में पता चलता है भैंचो कि हाँ भाई आंखों में दर्द हो रहा है। अभी तो नींद नहीं आती क्योंकि आदत पड़ी है, शेड्यूल ऐसा मेरा। और जब नींद पूरी नहीं होगी ना, जब पता चलेगा मेरे को। इसलिए भैया अभी फ्री हो गया हूँ तो सोने की कोशिश करता हूँ, चाहे नींद आए या ना आए। मेरी आंखों को आदत पड़ी है ना, सैटरडे नाइट को और जगना होता है 6 बजे तक, इसलिए नींद नहीं आ रही। मन तो है लोंडो मेरा रोब्लॉक्स खेल लूँ तुम लोगों के साथ, बताओ, बट 1 घंटा खेल पाएंगे लोंडो, कुछ फ़ायदा नहीं है, हैं। अंश भाई बताएंगे, अंश भाई खेलते हैं रोब्लॉक्स की, अंश भाई से बातें कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर रोब्लॉक्स की, क्योंकि तुम लोग तो बस देखते ही हो। तो रोब्लॉक्स अंश भाई खेलते हैं, अंश भाई से पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं। कोई बात नहीं अंश भाई, आज करेंगे तो रोब्लॉक्स की स्ट्रीम, ठीक है।
आज रात तो पूरी करने वाले हैं। हैं? आज रात तो पूरी करने वाले हैं। आज रात तो पूरी रोब्लोक्स की होने वाली है वैसे भी, 10 बजे से, वो भी 10 बजे से, है ना, संडे को। तो ठीक है लोडो, अभी स्ट्रीम बंद करते हैं क्योंकि हमारी गेम भी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही अच्छी गेम थी सीरियसली, राइजन 4 बिट हमारे। एंड स्क्रीन प्ले करूँ और तुम लोग भी टाइम से सो जाओ, बाकी मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। मेरे को चुल रहती है कि मैं काम कर लूँ कुछ, है ना, थोड़ा चुल को शांत करके सो जाता हूँ, साइलेंस ना बनूंगा। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, तुम सब टिके एंड तक, ठीक है। जो भी मेरी फ्रेंड्स है वो भी टिकी, ठीक है। और जो बाकी जो भटके हुए सब्सक्राइबर थे वो वापस आ गए हैं, उनको भी थैंक यू वापस आने के लिए, ठीक है। जो भटक गए थे बीच में, ठीक है, जो आ नहीं रहे थे वो वापस आ गए हैं, उनको भी थैंक यू वापस आने के लिए। और बाकी जो नए लोग आए हैं, ठीक है, जैसे अपने एक भाई है नया माल, उनका नाम ही अलग है, नया माल। एंचो सच में ही नया माल हो भाई तुम, सच में भाई सच में भाई नया माल हो तुम। तो उनको भी थैंक यू भाई जुड़ने के लिए हमारे साथ, हमारी बीम जी फैमिली में, ठीक है। बाकी मेरे को इतना यकीन है जो जो लोग वापस आए, जो जो लोग नए जुड़े हैं, और बाकी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो रोज आएगी, मुझे इतना तो विश्वास है। और जो बोलते हैं ना कि रोज आएंगे, पहले ही बोलने लगते हैं नहीं नहीं भाई हम तो रोज आएंगे, मेरे को ना समझ में आ जाता है ये बंदा रोज नहीं आएगा भाई। मेरे को ना पता नहीं क्या है, बंदा पहचानने की है शुरुआत से आदत बहुत ही अच्छी, ये ना मैं शक्ल देखते ही पहचान जाता हूँ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, ये नहीं आएगा टीम में, झूठ बोल रहा है। 200 वॉचिंग हो गई लोंडो देखते देखते, स्ट्रीम बंद कर देते हैं ना, लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। लोगों को पता चल गया गेम खत्म हो गया, बकचोदी करे जा रहा है हिंदी में, चलो भाई हिंदी में तो ठीक है लोंडो, अब मैं स्क्रीन प्ले करता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को पता चल जाता है भाई कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, मैं तो फिर भी हाँ कर देता हूँ। अब चले गए, हाँ चले गए, मेरे में अभी भी 200 वॉचिंग दिखा रहा है भाई। तो ठीक है लोंडो, एंड स्क्रीन प्ले करते हैं अब। तो लोंडो, आज की स्ट्रीम में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फ्री की स्ट्रीम में, फ्री किसी एपिसोड में, तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दिल से सब्सक्राइब करने का, सोच समझ के सब्सक्राइब करने का, अच्छे से कंटेंट देख देख के सब्सक्राइब करने का, सारा कंटेंट देख देख के सोच समझ के, ठीक है। बाकी स्ट्रीम को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना शेयर करना। तो बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से दोपहर को 1 बजे रोज की तरह, ठीक है। इसकी स्ट्रीम में बियॉन्ड टूल्स की स्ट्रीम में, सारी स्ट्रीम्स ऑलरेडी शेड्यूल कर रखी है, तुम लोग को मैंने बताई थी ये बात, दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना तुम लोग अभी जाके स्ट्रीम का, ताकि मैं 1 बजे स्ट्रीम करूँ तो सबसे पहले तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। और देखते हैं आज की स्ट्रीम से कि कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। बाकी जिन लोगों ने कहा है कि जो रात को आएंगे तो वो रात को ही आएंगे, तो अच्छी बात है, टाइम बता दिया उन लोगों ने कि वो लोग रात को आएंगे। बाकी जिन लोगों ने कहा है कि हाँ भाई हम तो आएंगे, ठीक है, पूरे दिन वाली स्ट्रीम में आएंगे, तो देखता हूँ कितने आते हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से बियॉन्ड इट टू सूल्स के एपिसोड 3 में 1 बजे, ठीक है। बाय बाय लोडो, गुड नाइट। और बहुत ही मज़ा आ गया लोडो, बहुत ही अच्छा रहा मूड, गेम भी अच्छी थी और स्ट्रीम भी बहुत ही अच्छी हुई। पहली स्ट्रीम थी मेरी लाइफ की जो कितनी अच्छी सक्सेसफुल स्ट्रीम रही, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस बर्थडे गिफ्ट, बाय बाय लोडो एंड गुड मॉर्निंग। क्या गुड नाइट BMG भाई, ओके गुड नाइट अंश भाई, बाय बाय। लाइट चली गई थी, है ना, और वाईफाई भी चला गया था। बिना लाइट के गर्मी में स्ट्रीम करी और बिना वाईफाई के स्ट्रीम करी नेट से। नाइस लोडो भाई, विश्वास नहीं हो रहा। और नेट अभी मेरा खत्म होने वाला है, 90% का तो आ गया था नोटिफिकेशन। स्ट्रीम बंद कर देता हूँ जल्दी से, नहीं तो गोला घूमने लगेगा। कर दिखाया लोडो वैसे मैंने, है ना, बाय कहने का मन नहीं करता। बाय बाय लोंडो, प्यारे लोंडो, #BMG फैमिली।